last outing between Balochistan and Central Punjab saw an absolute cliffhanger, where Balochistan held their nerves to steal a 2-run win. Building on the early momentum, Balochistan sitting at number 3 at the points table, winning 3 out of 5 games. But Central Punjab struggling with their form in the tournament, winning only a single game out of 5. Can the change of venues bring the change in fortunes for Central Punjab? Or will the exuberant Balochistan side continue its dominance against them? Very warm welcome to Multan Cricket Stadium. It's good afternoon and action continues. Kingdom Valley National T20 Cup. Balochistan taking on Central Punjab. We had a really good encounter early on, and these two teams are looking to start off with a win here at Multan. Central Punjab obviously has a lot to sort out. Balochistan, they had a really good momentum going on their side, the Pindi leg. This is a whole different scenario now. We witnessed that the surface had ample runs. It was a really good track to bat on. The bowlers have to do the hard work here. Decent track, runs coming in. The batters did had a lot of time and favourite to get the runs going on here. The bowlers, yes, they need to pick their areas to bowl, and it's a hard task to get those wickets going. We'll join Shah Faisal, who is with the captains for all important toss. Game number 18 of Kingdom Valley National T20 Cup, and this one is coming between Balochistan and Central Punjab. I've got the two skippers, Yasir Shah, Qasim Akram, and the match referee, Mr. Javed Malik. Yasir has got the coin, he'll give it a flip. Tails is the call. And it is tails. Central Punjab has won the toss. Qasim, क्या फैसला किया आपने? जी बैटिंग करेंगे. पहला मैच आपने देखा इस पिच पे, कैसे असेस कर रहे हैं इसको? जी बैटिंग ट्रैक है और बड़ा अच्छा टोटल हुआ है पहले भी, और हम इंशाल्लाह बैटिंग ही करेंगे और अच्छा टारगेट सेट करेंगे. पिंडी लेग में सिर्फ एक ही विक्ट्री आपको आई, लेकिन ये एक नया वेन्यू है, नया स्टार्ट है. कैसा माहौल है टीम में? जी बड़ा अच्छा माहौल है. पिछला मैच हम जीते हैं, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, तो इंशाल्लाह आज भी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे. और टीम न्यूज़? सेम टीम. चलें कासिम, हैव अ ग्रेट गेम. थैंक यू. यासिर, पहले बॉलिंग कर रहे हैं, कैसा है? ठीक है, वैसे विकेट जिस तरह बैटिंग विकेट खेल रहा है, और दूसरी टीम जो जिसने बैटिंग की है वो 2 रन से आ रहे हैं, सो यहाँ पे विकेट बैटिंग के लिए सपोर्टिंग है. अच्छा, बलूचिस्तान की टीम में जब आप यहाँ पे थे, हम पाकिस्तान कप में भी आप जीते, एक नया जज्बा नज़र आ रहा है, एक नई फील्ड, जब आप लोग फील्डिंग भी कर रहे होते हैं तो एक माहौल नज़र आ रहा होता है. खुद आप इसको कैसे देख रहे हैं एज ए कैप्टन? कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेलें जो ज़रूरत होती है. अभी जिस तरह हम हमारे बैटिंग बॉलिंग सारे अच्छी जा रहे हैं, फील्डिंग में तो हमारा मसला हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह उसको अच्छा करें. और आज टीम न्यूज़? आज एक चेंज है, हारिस सुहेल नहीं खेला, अली वकास खेल रहे हैं. चलें यासिर, हैव अ गुड गेम. Thank you. So the news from the center is that Central Punjab has won the toss and they will be batting first. Central Punjab winning the toss, and they are backing the same combination they won the last game with. Abdullah Shafiq, Tayyib Tahir has been in great form. Shoaib Malik, all important. Mohammad Akhlaq, there's a lot to say about. And those bowling options, obviously Sam Amir, one to look out on this surface. Got Sikandar with me. What's your take on Balochistan? Yeah, Balochistan has been good throughout the tournament. Yasir Shah is leading them well. They've got Ali Waqas in the side. He's playing after 5 years. So that's going to be like a big moment for him. A match day after 5 years. पीछे चला जाता है.
Akhlaq is opening for their side. And with him is Abdullah Shafiq at the no strikers. Abdullah Shafiq is opening. He hasn't really been amongst runs. He surely has all the talent to do so. 102 not out is his best in this format, in this tournament itself. That's the national T20. This is a couple of years ago. It was the same ground on debut. Junaid Khan will open the proceedings, 32 years of age. Both these teams would have had a careful look at what happened in match one. Runs are available on this track and should look good for them. Chasing is possible if you just put a bit of a sense into it. We saw the first game, it was a very close one. Just the margin was 1 run. Bowlers, they have to do the hard yard here. It's a pelter of a wicket. All the defensive skills will be tested definitely. You have to pick your areas. Junaid Khan with the first delivery. First runs and Central Punjab are on their way. Well, they know that there are ample of runs available on this surface. Probably it's more about the bowling. The one with more resolute plans, who can execute well in terms of the areas they're being pitching. And that's all important. Akhlaq, he loves to go after the bowlers. We've got a slip in for him. Junaid Khan had a good outing in Pindi. He looks in good rhythm. Grabbed a few wickets as well. A lot of runs are being offered on this surface. It's a hard track, decent one as well. Very little support for the bowlers. Spin, yes, you can count that in. Spinners might have a say, but overall, the batters will enjoy their stroke play. It's a good bounce, good even surface for pace bowlers. Quick run there. Different teams have a different kind of approach in this tournament towards the power play. Some of them have stepped out of their comfort zone and tried something different. We saw Hurera being pushed in the order, Hassan Nawaz being rested, Northern got big runs. Not that Hassan wasn't performing, it's just a different combination. Central Punjab is one team who've been finding it very tough in the power play. Early Abdullah Shafiq was opening with Ahmed Shahzad, then they got Abdullah Shafiq and a different partner. Now Akhlaq has been sent up in the order, which means they want runs. Who doesn't? But in the power play, what's the strategy? You want to just not lose wickets and make sure that you are out there and then express yourself after the circle opens up. Yeah, but it's just certain roles that individuals are actually performing. Akhlaq is surely out there to hit it big. Abdullah Shafiq probably bat through. He's got the shot. You don't need to hit big sixes. It's just that he's not finding the touch. This good pitch to bat on might help him. Just a single there. This will definitely aid the batters and the temperament Central Punjab has. Tayyib Tahir was the lone warrior. Fahim Malik got few runs against his names. But the start, the top order, they need to sort that. It's more about the execution now and the mindset. Runs are there. It's not a challenging surface. You get reward for good shots here and good technique as well. It's just to have a positive intent to score runs.
First over gone. Central Punjab 3 without loss. He's been superb, Tahir. He's all padded up. He's got a lot of runs in the Pindi leg. Has held that batting lineup all together. Right arm over the wicket. No, thoda piche. Yes, this is. Right arm over the wicket. Khurram Shahzad. He'll fear the new ball with Junaid. Has been decent in Pindi. Good pace, hitting the hard length. But he needs to adjust to this surface very quickly. He's got pace and can go for runs if you don't pitch it in the right areas. In the air, catch it a sound, and I'm not sure. I'm not really sure, Marina, if that was a very 100% attempt from the fielder down in the deep. That's Junaid Khan. Have a look at that if you can see it on the screen for that catch. Was in the air for a long time. Forget about where Abdullah is, but look at this. He just stopped himself. Why didn't he go for the catch? That's Kashif Bhatti. I don't believe that. Fielding is going to be important. You're not going to get easy chances to dismiss batters. You have to take those half chances and convert them into successful ones. With the modern day cricket, these are the ones you always want to go after. Straight. Chase here. Might not win the race. Ball travels very quickly. Oh, that's well done. It's really well done by Ahmad Butt. That's important. That's more like it. Yes, the outfield is quick and fast, but you need someone running behind them. It wasn't really middled. Never got timing get going on in that one. Abdullah Shafiq just forcing shots on both occasions. But that's a really good effort. Saved certain boundary there. Again, nothing on the bat. It's just not being timed well at the moment by the two. Abdullah Shafiq and Akhlaq. Just trying to charge down on Khurram Shahzad. He's got decent pace, gets the bounce. It's never easy to time that. Probably it's better to stay in the crease. But look at that. He just followed it, Khurram Shahzad, giving no room. Would be a good deploy to stay in your crease and then try that shot. Runs. This should be a boundary actually. That's very well placed. Well played by Abdullah Shafiq. Yeah, Khurram Shahzad just leg stumpish and it's been put away. That's more like it from Abdullah Shafiq. Just timing. That's his strength. Just rolling the wrist, help it on its way. You will get runs, that's for sure. You don't have to enforce anything. Not early. Initially, there are always run. You will get something out from the bowler as well. Some loose deliveries. He's a busy captain, Yasir Shah. He's led well. Always very athletic in the field. Make sure whenever an opportunity arises, capitalizes on that.
Just one to go in this over. That's over. That's over. 2 gone, 12 for no loss. Central Punjab have had their fair share of trouble. Few wins. Maybe change of venue can bring some change in their luck as well. They've got decent players in their side, but just the execution, things aren't getting together for them. Ahmad Bhatt now change straight away, replacing Junaid Khan. You can clearly feel a bit of a rustiness somewhere in the opening pair. They're just not as fluent as what we know about them. And on a pitch like this, we've been harping about it, how good this pitch is. And the endorsement of that is 190 from both sides. Almost 400 runs scored. And you can't even say that. I mean, they're playing, what, 7th or 6th match, Central Punjab. You need to get out there and get on with it. Especially Akhlaq, who's got a role. He's been promoted from the number 5 or 6. Now that's more like it. That's gone for 6. The intent has to be there, and we saw shades of that now. Ahmad Bhatt just erring a little bit in the line. He's put away by Akhlaq. Onto the pads, anything? He'll go after it. It's picked up nicely right out of the middle. I think they're probably trying a little too hard to get out of the shell. It's a decent surface. Again, just you can see a lot of panic in their footwork. It's too early to just use the crease. They're going very hard. Doesn't matter wherever it's pitching, you can see a lot of shuffling in the crease. Whether it's Ahmad, Junaid, trying to go hard. There's a lot of gaps if you play with softer hands. Just the rotation of strike is much better than a dot ball or a forced shot. In the air, but oh yes, Shan Masood, tall man, but this was just around waist height. Again, that fact that we're talking about, Marina, that is just a slight rustiness. The timing isn't right. Akhlaq walks back after scoring 10. Ahmad Bhatt claims first blood. He was in no position to play any shot, just totally squared up. The pad coming in at the last moment, and the edge travelling straight to Shan Masood. It's just probably that pressure of scoring big, posting a big total has started already to get to them. Has to take the walk now. Akhlaq gone on 10. In Central Punjab, 19 for 1. Ajo! Shaji!
Ahmad Butt strikes in his first over. Gets Mohammad Akhlaq's wicket, caught by Shan Masood. Faizan comes out, very promising, played very well in the last time Central Punjab featured. He was in fact the man who gave them that quick fire runs in the power play. I wonder why he's come at number 3. He gets an opportunity early because they've been losing openers pretty quickly, Central Punjab. You could just sense that there's a lot of pressure for them to post a big total. Qasim did mention that it's a good batting track. But have a look at that, the execution, the shot selection, it's nowhere. And that has been the case for Central Punjab. They are struggling clearly. They're not learning. No. Over. Over completed. 19 for 1 after 3. Central Punjab in this tournament so far, just that one win. That was courtesy Faizan's quick fire, 50 of 20 balls. That's the fastest 50 in this season. Otherwise, they've just been struggling. One of the games, they lost by 86 runs to 80 of Southern Punjab. That's the game where Salman got 5 wickets in 3 overs for just 10 runs. The indecisiveness there. That's the gift of pressure. You're never sure what shot to play. Abdullah Shafiq hasn't really clicked. Just that 33 against Northern of 23. Has struggled and has been giving away his wicket very cheaply. You need to have a track when you come out to bat. It's few initial overs, how you want to go about your batting. Judge the surface and the bowlers. This should be runs for Central Punjab here. At least 2 of them. It's good bowling from Balochistan though. They haven't given any width outside off stump or looseners, apart from couple targeting the stumps, hitting the hard length. Bounce is pretty decent. Got deep square leg. And the third man. Again, just going too hard. Not been timing the ball well. That's not his strength. That's not his nature to go hard after the ball. He times it well. That's his comfort zone. Have a look at that. Just enforcing that. Wanting to get a boundary. Wishing something to happen. Made it safe at the end. That's Apesh. More runs now. And a maximum. Junaid Khan, this time just the length allowing Faizan to pick it up nicely. And he helped it on its way. First maximum, Central Punjab's inning. It's just the angle that actually helped him play that shot. Had a lot of time to pick that length up. Easily done.
Shot again. You see, every time you put it on the legs, he's too good a batsman to let it go. He'll score runs there. And especially Faizan is in sublime form. He's doing very well. Just looking for trouble. His easy pickings. Trying to hit the deck hard, and he falters in his line twice now. The first one went for the 6, and now this. But the field, obviously you would love to finish it around off stump, probably middle if you want to take a risk. But this is poor bowling. He started off well, now turning out to be expensive. Few adjustments in the field. This is a deep point. Asked to be a little bit straighter. That's runs again. That's another boundary. This outfield is quick. This outfield is fast. End of 4, 36 for 1. मोहम्मद फैज़ान को आज एक बार फिर बैटिंग में प्रमोशन मिली है। पिछले मैच में पिंडी में आए थे वन डाउन खेलने के लिए और काया ही पलट के रख दी थी। निस सेंचुरी बनाई थी अपनी अव्वलीन ऑलराउंडर ने। अब्दुल्ला शफीक को रन्स की ज़रूरत है और बाउंड्रीज की भी। इससे फ्लिक किया, ज़रा सा ऑफलाइन हुए और इस पिच पर गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है बॉलर्स के लिए। जी हाँ, टैलेंट, स्किल सब कुछ मौजूद है, सिर्फ एग्जीक्यूट करने की देर है। और ऐसा लगता है कि आज वाली इनिंग उनकी फॉर्म वापस ले आएगी। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ये बहुत शानदार रिस्क का इस्तेमाल किया। बॉल भी, लाइन भी ख़राब थी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से खेला अब्दुल्ला शफीक ने। बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है इनकी। अब्दुल्ला शफीक 2020 में कोविड के दिनों में यहाँ नेशनल T20 कप में अपने पहले ही मैच में सेंचुरी बना गए थे और इसी तरह के कई जारहाना शॉट्स खेले थे उस रोज़। ज़रा सा पीछे हटे और इससे खेल दिया ऑफ साइड के गैप में। इस मरहले पर 6 फील्डर हैं ऑफ साइड में, लेकिन अब्दुल्ला शफीक के लिए ये नाकाफी थे। यहाँ बहुत ही कमाल का शॉट मारा एक बार फिर। जैसे जैसे खेलते जा रहे हैं उतना अपना अच्छा दिखते जा रहे हैं। स्टाइलिश प्लेयर हैं, रूम दिया अपने आप को। 6 फील्डर ज़रूर थे, लेकिन जिस तरीके से ये बॉल उनको चीरती हुई गई है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देगी अब्दुल्ला शफीक को। उठाकर खेलना चाहते थे, यहाँ पर ये लीडिंग एज विकेट कीपर आ गए और बंगल जई को उन्होंने कॉल कर दिया और अब्दुल्ला शफीक ख़राब शॉट का इंतखाब कर बैठे। मुसलसल 2 चौके वो पहले ही लगा चुके थे और अम्माद भट्ट को उन्होंने उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट पे नहीं की। जी हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी नज़र लग गई इनको। और ख़राब शॉट, मिड विकेट ढूंढने गए थे, लेकिन अम्माद भट्ट थोड़ा खिंचा हुआ बॉल था, राइट चॉइस नहीं थी। एक अहम विकेट हासिल किया अम्माद भट्ट ने। अब्दुल्ला शफीक 19 रन बना सके 44 पर 2 सेंट्रल पंजाब।
तैयब ताहिर, इनकी बैटिंग पोजीशन जो है वो तब्दील होती रही है। 1 डाउन भी आए हैं, एक मैच में इनिंग्स आगाज़ भी किया था। आज नंबर 4 पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे। तो फैज़ान को प्रमोशन मिली। अच्छा स्कोर है सेंट्रल पंजाब का। अब्दुल्ला शफीक शायद हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए इस स्ट्रोक पे। जी हाँ, बिलाशुबा, क्योंकि आगाज़ अच्छा है। आप 10 की रन रेट से जब आप रन्स कर रहे हो तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट से बाउंड्रीज मिल रही हो तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीखना होगा। क्योंकि हमने सुबह से ही देखा है कि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत बेहतरीन है, और जैसे प्लेयर अब्दुल्ला शफीक हैं उनसे ऐसी शॉट की तवक्को की नहीं जा सकती है, क्योंकि शायद मुंह कहीं, आंखें कहीं, बल्ला कहीं, और ऐसे बॉलर को आप, जैसे आपने पहले कहा कि रिस्पेक्ट तो देनी होगी। और डिसअपॉइंटमेंट जायज़ है क्योंकि आगाज़ मिल गया था। अभी तक पेसर्स का ही इस्तेमाल किया है यासिर शाह ने इस पावर प्ले में। ओह, बैकफुट पंच, लाजवाब शॉट फैजान का। उनने दिखाया है कि वो हार्ड हिटर ही नहीं बल्कि क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलने की अहलियत रखते हैं। या जो बात है, बहुत ही शानदार तरीके से पंच किया बॉल को, और ये जितना अच्छा पिच है यहाँ पे बॉल भागता है और उतनी ही शानदार आउटफील्ड है। बहुत तेज़ी से बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाता है। शायद इसी वजह से जो अब्दुल्ला शफीक की विकेट है वो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनको हुई होगी, क्योंकि पिच शानदार है, सिर्फ बल्ले पे बॉल लग रहा है और बॉल भाग रहा है, और इसीलिए रन्स नहीं रुक रहे हैं। पहले दोनों मैचेस में 50 से ज़्यादा रन्स पावर प्ले में बने थे, और सेंट्रल पंजाब की टीम भी बिल्कुल ये मरहला तय करने वाली है। अच्छी क्रिकेट, नौजवान फैजान की जानिब से गेंद को लेग साइड में गिराया, उन्होंने सिंगल पिंच किया। कामयाब ओवर रहा माद भट्ट का, जिसमें उन्होंने अपनी दूसरी विकेट ली 49 पर 2। डिसअपॉइंटेड हो गया अब्दुल्ला शफीक। 19 रन की इनिंग खेली, अहमद इखलाक 10 रन बना सके, और इनफॉर्म बैटर जो हैं, दोनों इनफॉर्म बैटर सेंट्रल के लिए, मोहम्मद फैज़ान और तैयब ताहिर इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। बहुत अहम पार्टनरशिप, एक बहुत अहम पैसेज है ये क्रिकेट की इस इनिंग का इनके लिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सेंट्रल पंजाब का जो इन्हिसार है वो इनकी बैटिंग पर ही है। इनकी बॉलिंग में वैसी डेप्थ नहीं है इस पिच के एतबार से। शायद इनके जो स्पिनर हैं उनको उतनी मदद ना मिल सके इस पिच से। उसामा को बाउंस मिल रहा था रावलपिंडी में, यहाँ पर आज ऐसा होने का इम्कान कम है। 50 रन मुकम्मल किए। मोहम्मद अली डेजी अभी वो नए हैं, हालांकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी रावलपिंडी में। फैजान को खुद बॉलिंग करना पड़ेगी। आमिर यामीन वो मकामी हैं लेकिन रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, जो बात है। तैयब ताहिर के लिए ये टूर्नामेंट शानदार रहा है। सेंट्रल पंजाब एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ज़्यादा टैलेंट और स्किल मौजूद है, और उसके अंदर अपनी टीम में जगह मुस्तकिल बनाए रखना भी बहुत शानदार बात है। और तैयब ताहिर ने प्रूव किया है कि ये T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरीके से ज़ोरदार हिट मारते हैं और कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, ये एक सबसे ख़ास बात है। 214 रन्स बना चुके हैं नेशनल T20 में इस वक्त। सेंट्रल पंजाब के तो सबसे बेहतरीन बैटर वही सामने आए हैं। या पिंच हिटर की ही पहचान है फैजान की, और वो इस आखिरी ओवर का फ़ायदा
उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस शॉट खेले बगैर भी रन्स बना सकते हैं। थ्रू द लाइन आप शॉट खेलिए, बैकफुट पंच उन्होंने बड़ा लाजवाब किया था पिछले ओवर में। टेम्परामेंट का भी इम्तहान है फैजान का, जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो इस वक्त 200 का है, क्योंकि जब ऐसी आपको पिच मिल जाए जो बैटिंग के लिए बिल्कुल जन्नत हो और इससे पहले आपने रन्स भी बनाए हुए हों, तो फिर कई बार आप जज्बात की राह में बह जाते हैं और लंबी इनिंग्स खेलना ऐसी पिच पर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हुक करने के लिए गए और ये जोरदार छक्का, इसमें टॉप एज जरूर इन्वॉल्व था, लेकिन इसकी फिक्र क्या की जा सकती। जी हाँ, और जब आप इतने बहादुर होते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। अच्छा डायरेक्टेड बाउंसर था, हेलमेट की तरफ आया और जोरदार बल्ला घुमाया और लकी रहे कि बॉल ऑल द वे कैरी कर गया 6 रन्स के लिए। यहाँ पे जब जैसे जैसे बैटर्स अपनी विकेट गवाएंगे उतना उतना उनको ज़्यादा अफसोस होगा बाहर डगआउट में बैठ के कि काश हम अंदर बैटिंग कर रहे होते, काश वो गलत शॉट सेलेक्ट ना किया होता, क्योंकि फुल ऑफ रन्स हैं ये पिच और आउटफील्ड भी कमाल की है। अभी हमने डगआउट में सेंट्रल पंजाब के देखा कि वकास मौजूद हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, शायद उनको भी टीम में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस कम नजर आता है हमें सेंट्रल पंजाब के लिए। हवा में और सीधी गई हाथों में। असद शफीक ने अच्छा कैच लिया, इस बार मिडल करने से कासिर रहे। पहले हुक शॉट और जरा सा लेट हो गए थे, लेकिन बॉलर से किस्मत ने यावरी नहीं की और इस बार विकेट हासिल हो गई खुर्रम को। क्या बहुत जल्दी में लग रहे हैं सेंट्रल के बैटर्स, ऐसे लग रहा है कि हर बॉल पे हिट मारना चाहते हैं, वो गलत हो वो सही हो, सिर्फ रन आने चाहिए। और जैसे आपने अभी पहले जिक्र किया कि जब इतना अच्छा पिच होता है तो आप कैरिड अवे हो जाते हैं, आपको लगता है कि जो शॉट आप अटेम्प्ट करेंगे वो लगेगा, लेकिन रिस्पेक्ट देना होगी। फैजान ने 26 रन बनाए, 57 पर 3 सेंट्रल पंजाब। कासिम अकरम जो सेंट्रल पंजाब के कप्तान हैं वो मैदान में उतरे हैं। 3 विकेटें गंवा दी हैं 57 रन बनाने के बावजूद, वो बहुत ज़ोर से गए हैं सेंट्रल पंजाब के बैट्समैन। 143 का स्ट्राइक रेट है और ये बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है किसी भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो रन्स हैं कासिम अकरम के वो नॉन पावर प्ले की मरहून मिन्नत रहे हैं, तो इससे भी इससे जाहिर होता है कि ये कितने अच्छे बैट्समैन हैं इस फॉर्मेट के। और ड्राइव करने के लिए गए, कनेक्ट नहीं कर सके। बड़ा अच्छा फाइट बैक खुर्रम की जानिब से, पहला ओवर उनका महंगा रहा और इसमें छक्का लगने के बावजूद उन्होंने बाउंड्री हासिल की। कैच भी अच्छा था असद शफीक का। यहाँ शॉट सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है, या तो एलिवेशन लेके आप ऊपर से मारते, यही शायद वो सोच रहे थे कि ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन टाइम नहीं कर सके। 6 ओवर्स के बाद 57 पर 3 सेंट्रल पंजाब।
यासिर शाह, ये मैदान जो है ये उनके लिए इस साल के शुरू में खासी बड़ी शिकारगाह बना था। उन्होंने कप्तानी की थी, विकेटें ली थी पाकिस्तान कप में। यहीं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर ही बलूचिस्तान को चैंपियन बनवाया था। बड़ी अच्छी फील्डिंग भी की थी और इस टूर्नामेंट में भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब की टीम जो है वो हार गई थी अपना सेमीफाइनल पाकिस्तान कप में। करने के लिए गया है लेकिन यासिर शाह ओवर स्पिन करने में कामयाब हुए। अच्छा टाइम है यासिर शाह को बॉलिंग करते हुए, क्योंकि 3 विकेट्स गंवा दी हैं सेंट्रल पंजाब ने। जैसे स्पिन उनको मिलना शुरू हुआ है, अगर इनका रिदम बन जाता है, इनका बॉल गिरना शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी सेंट्रल के लिए। ऑल्दो बैटिंग काफ़ी है, शोएब मलिक को बैटिंग करने के लिए आना है। इरफान न्याजी बहुत शानदार उभरते हुए नौजवान प्लेयर हैं। आमिर यामीन भी इस टीम का हिस्सा है। रन रेट तो इस वक्त सही चल रहा है, बस विकेट्स बचानी है, थोड़ा लंबा लेके जाना होगा इस इनिंग को। और ये अच्छा मौका है कासिम अकरम के लिए, कप्तान है टीम के शोएब मलिक। प्रोबेबली अच्छे तरीके से खेलना है। तो शोएब मलिक के होने से आपको क्या लगता है कि कासिम अकरम जैसे ऑलराउंड क्रिकेटर के लिए, जो कि ऑफ स्पिनर बैटर हैं, कितनी मदद हासिल होगी उनको शोएब मलिक के एक्सपीरियंस से? जहाँ जाहिर है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में और ख़ास तौर पर ये उसी तर्ज के क्रिकेटर हैं जैसे शोएब मलिक का रोल रहा है वाइट बॉल क्रिकेट में। एक 3-in-1 क्रिकेटर का 2 रन हासिल किए तेज़ दौड़ लगाकर तैयब ताहिर, कासिम अकरम ने। और ये शोएब मलिक की तरह बहुत तेज़ दौड़ते भी हैं विकेटों के दरमियान कासिम अकरम। ये देखिए पहला रन जो है तेज़ से लिया और फिर इनका जो बल्ला था बिल्कुल सही हाथ में था। जब ये गए बैटिंग एंड पर बाएं हाथ में था, और ताकि ये गेंद लेग साइड में गई थी उसे देख भी सकें और दूर से मुड़ भी सकें। 7 ओवर्स के बाद 61 पर 3 सेंट्रल पंजाब। और अगर सेंट्रल पंजाब की इस इनिंग पे नजर डालें, अच्छा आगाज किया था अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद इखलाक ने, लेकिन अनडन किया अहमद भट्ट की स्मार्ट और क्लेवर बॉलिंग में। अब्दुल्ला शफीक और फैजान ने एक बार फिर अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन जब जब पार्टनरशिप लगी है खराब शॉट मारी गई है सेंट्रल के बैटर्स की जानिब से। अब्दुल्ला शफीक से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फैजान अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक बार फिर गलत शॉट का सेलेक्ट किया और अपनी विकेट गवा बैठे। 61 पर 3 सेंट्रल। काशिफ भट्टी दोनों एंड से अब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, और ये दोनों बैटर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तैयब भी और कासिम अकरम भी। और गेंद हवा में और 2 हाथ मिल गए यहाँ कासिम अकरम को भी। काशिफ भट्टी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कासिम अकरम अपने इस कट शॉट पर कंट्रोल नहीं कर पाए। सेंट्रल पंजाब की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश में अपनी विकेटों से हाथ धोती जा रही है, और हमें लगता है कि इन बैटर्स की तारीफ थोड़ा कम करनी होगी, क्योंकि जब जब हमने तारीफ किया है इन्होंने अपनी विकेट गंवा दी है। और हम अभी बात ही कर रहे थे कि कासिम अकरम कितना अच्छा खेलते हैं स्पिन को, और एक ख़राब शॉट, बहुत ज़ोरदार शॉट मारे। ये विकेट तो कमेंटेटर्स कर्स साबित हुई है इनके लिए। 61 पे 4। बहुत ही एनिमेटेड से कप्तान है यासिर शाह, इन्वॉल्व रहते हैं गेम के अंदर।
जैसे आप आगे जिक्र कर रहे थे कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान कप जितवाया था, उसमें इनका बहुत अहम रोल था उस टूर्नामेंट जीतने में। इनकी अपनी बॉलिंग भी, कप्तानी भी बहुत शानदार रही थी, और शानदार से हमें शोएब मलिक याद आ जाते हैं। 11,771 रन अपने करियर में बनाए। ये छोटी बात नहीं है T20 क्रिकेट के लिहाज से। 72-50 बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट 127 का, बहुत इंप्रेसिव। 95 उनका बेस्ट है। तो यहाँ पे एक बार फिर एक अहम रोल निभाना होगा सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि 4 विकेट्स गवा चुके हैं। अब यहाँ से एंड तक खेलना होगा। 20 ओवर तक शोएब मलिक को बैटिंग करनी होगी और अपने साथ बाकी यंग बैटर्स को खिलाना होगा। ये खुद गेंद से दूर थे और जो है मिडल कर नहीं सके, और ना ही इतनी अच्छी प्लेसमेंट थी कासिम अकरम की जानिब से। यहाँ थोड़ा वेट भी पीछे को था, कि जब आप कट शॉट मारते हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा करीब हों बॉल के, क्योंकि अगर आप दूर से कट शॉट मारेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो हवा में जाएगा फील्डर के हाथ में। लेकिन थोड़ा दूर से मार के, थोड़ा करीब होती बॉल, थोड़ा बैलेंस बेहतर होता तो शायद ये नीचे बॉल रख सकते थे। लेकिन शानदार कैच अब्दुल वाहिद बंगलज़ई की जानिब से। ये भी एक बेहतरीन फील्डर हैं। यहाँ कासिम अकरम अब बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं इस वक्त, सर झुकाए। जाहिर है कि जिस तरह का पोटेंशियल है इनका वो देखने में नहीं आया। कट शॉट के लिए 2 फील्डर हैं तैयब ताहिर के खिलाफ। ये अच्छा ओवर, 2 बैक टू बैक बड़े ही आला ओवर्स अभी बलूचिस्तान की जानिब से। यूँ कहना चाहिए कि पिछले 3 ओवर्स में रन्स ना होने के बराबर दिए गए और 2 विकेटें भी हासिल हुई। इससे सेंट्रल पंजाब की टीम ये दीवार से जा लगी। लेकिन इसमें ज़्यादा कमाल बॉलिंग का नहीं है, ज़्यादा दोष ख़राब शॉट्स का है जो सेंट्रल पंजाब के बैटर्स ने खेली हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सके बॉलर्स। ख़राब शॉट्स। 8 ओवर्स के बाद 63 पर 4 सेंट्रल। It's a massive appeal from Yasir Shah, but the umpire not interested, and has been signalled a boundary. This particular start, run-wise is good, wicket-wise is not so favourable. Have a look at this again. Really appealing for pad first. Did it clip the flap on the way? Those 2 noises definitely. Tayyib Tahir will collect a boundary. Yasir is still having a word with the umpire. There were clearly 2 noises, Sikandar. Just not conclusive enough on the first evidence that did it hit the bat first or the pad. We've seen Tayyib Tahir very prolific on that cut shot because of his fast hands. He really comes down hard on the ball. That's his series so far. He's done really well. Just that one failure. He's been the rock for Central Punjab. Most of his contributions ended up on the losing side, but still, he's doing his bit. Come on, Shah. Come on, Shah. Well, PW करीब 4 की पहली गेंद
Good shot in the gap, boundary. Tayyib Tahir has been in good form. This is the pair that can do something for Central Punjab if they want to get a good score on this. Nice batting wicket. Such a good batting wicket that despite the constant loss of wickets, the run flow is very, very difficult to stop. Boundaries are flowing. Looks like the partnership builds here. We can still have another high scoring game. Call was for 2, but good ground coverage there. 72 for 4. Was a googly. Looked like it hit the pad first. Yasir Shah was really convinced, pleading even till that ball crossed the fence. He could not believe he didn't get that in his favor. The line was pretty straight. If you can adjudicate that as pad first, would have been curtains for Tayyib Tahir. Look at Yasir. He could not believe. He thought he nailed him right in front. But chance at the non-striker, and you'll have to be at your very best to run Malik out. He's not just very, very quick, but he's an excellent judge of a run as well. Just dropped the ball with the soft hands. Excellent cricket. Few spectators in the Fazal Mahmood enclosure. Across from us towards the left. Come on. It's a very hot afternoon here in Multan. It's in the air for a moment. With a half shout of catch it. Clever piece of bowling from Kashipati. He saw Shoaib coming, threw the ball wider, but Shoaib got to it. He's got long levers. Cut away. Just a single there. Balochistan would like to see the back of at least one of them, because they have the tendency to move things around and make the runs, and then they can accelerate when they like. Malik has all the experience. Tayyib Tahir has got the form, and this is the pair that will shape the look of the match for Central Punjab if they can. Malik will do that all day long. He's got plenty of time left. He can take his time, which he normally likes to do that. At the halfway stage, Central Punjab, 78 for 4.
DICC T20 Champions Trophy 2022 in the UAE, showcasing amongst the most talented deaf cricketers on the world, on the planet. You follow DICC for further updates. If you look at this this game and then compare it to the first one, we're pretty sure that two different sides are playing, but the fact that the pitch allows you to express yourself, and sometimes what I feel is that we demand or expect too much. It's a different bowling attack, a different struggling batting side, so you're bound to have different kind of results. You make a good point, because Central Punjab's batting has really struggled throughout this championship. Despite the wicket being as true as it was in the morning, or even in the second innings in the afternoon, it's just the level of confidence in your own ability to express yourself. You could see the look on the camp as well. Generally pretty glum, a couple of smiles in the middle. Has gone for 4. Yasir isn't much happy with the backward point fielder. He just wants him to be a little squarer. But this is Tayyab Tahir's strength. Wasn't much room. Just has amazing bat speed. There wasn't much of a gap either. That's why Yasir was disappointed. He didn't want the ball to go through this gap. And without no dive from the fielders, he's bound to be unhappy. Because he's setting Tayyab Tahir up, I think, because he's already had him once on the googly. In the air, catch it is the call. Shan Masood, who is that? Whoever it is, you called it right. At the end, Ahmad Butt doesn't make a mistake. Slog, and Shoaib Malik isn't happy with Tayyab's attempt on this shot. Nevertheless, they've lost another one. Yasir Shah viewing his magic, really enticing Tayyab Tahir. This is a slow, loopy delivery. Tayyab's eyes lit up. He thought he can have another boundary, but Yasir Gail was too much for him. Hit him high on the bat. Ahmad Butt is a very, very safe outfielder. Tayyab Tahir gone for 21. Half the side back in the hut for Central Punjab. 83 for 5. '83 for 5 in the 11th over. Brings in Irfan Khan Niazi, who replaces Tayyab Tahir. Half the side back in the dugout. 19 years of age. 10th game for him. He's already got a 57 not out in that. Big hitter, Irfan Niazi. In this struggling side, he's got an opportunity, slip in. He's a powerful player. He's played 2 good knocks in the tournament. Let's Tayyab Tahir was looking to clear the fielder. Like I've said many times, the modern day batters, they really don't worry about the sweeper. When they go for the big hit, they really want to take him on and has the confidence to clear them. 84 for 5.
Cash, come on, Cash. Hey, bucks up. What's your fighting score in this from here on? Say 8 overs to go after this? These two are good strikers as well. Malik, we all know what he can do. Irfan Niazi's also shown his prowess. They just need to build a partnership. They just take the innings deep. Anything can happen in the last 4 overs if they can give themselves that chance. So if you're the captain of Central Punjab, what would you say? Tell your boys that give me this much and I'll take it. Let's fight it out. But how much? Well, at this stage, they will take 160 with both hands. This is another matter if they will get to that. With a method, they can get to there, but they have to be very precise with their partnership right now. Well, 160, you're asking for 75 more runs. That's fine. 8 overs, 48 balls. That should be okay. We've seen sides scoring 70 plus in the last 5. And you need actually 2 players. Sometimes in T20s you can actually ignore the wicket score. If these two can just keep on scoring, then you don't have to worry. I always believe that if your number 7, 8 is batting in T20s, then something's going wrong. Your top 6 should bat 20 overs. And if you're going that deep, that you're struggling probably. Shoaib Malik got a big smile on his face. Look at that. He was on the move when he played that shot. Not much pace though to get it past through the infielder. But if these two are here by the end of 15th over, they can easily get up to 60 in the last 5 overs. Well, not easily, but they can get it. So they can still get up to 175 if things really go well. Come on. Come on, Cash. And that's going down. It'll be a 4. Shoaib Malik has started to maneuver in the crease a little bit. We saw that running stroke from him previously. This one once again not getting to the pitch. Lucky he got some part of that bat because he was stranded otherwise. Good deception from Kashif Bhatti, but he will have nothing to show for that. 7 of the over. Central Punjab can do that steadily for the next 3 overs and see where they end up after 15 overs. Running first one hard. Shoaib wants the second. Oh, slight hesitation. Could have been in trouble, Irfan Niazi. What was he thinking? And now overthrows coming in, and then 4 overthrows. Just sloppy here, Balochistan, for a moment. You don't want to let him off the hook. Well, it's 6 runs off that delivery. You can't hit the 6. You can have some like that. And there is slight hesitation. Irfan Niazi is a tall boy. He can cover the distance pretty quickly. Look at Shoaib Malik. He was never in doubt. Irfan Niazi hesitated, and that was out. Kashif Bhatti just let the ball go through. There was nobody backing up. Skipper Yasir Shah should have been back. Comedy of errors all around. Central Punjab will take the result though. 13 of the over so far. Cash. Keeper. Single of the last ball. 12 gone is 98 for 5.
2 कामयाबियां हासिल की अमाद भट्ट ने और औरम शहजाद, यासिर शाह और काशिफ भट्टी के जिम्मे में एक इकाई। खास बात यह है कि दोनों जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, बिल्कुल सर उठाने का मौका नहीं दिया। अमाद भट्ट एक ही ओवर में 2 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद से दोनों एंड से न सिर्फ रन्स रोके बल्कि 2 विकेटें भी हासिल की और खासी गहरी चोटें पहुंचाई सेंट्रल पंजाब को यासिर शाह और काशिफ भट्टी ने। कप्तान कासिम अकरम को चलता किया था काशिफ भट्टी ने और 19 पर यहाँ पहली विकेट गिरी थी। नींद ऐसा लगा, ऐसा तासुर दिया यहाँ बैट्समैन ने जैसे कि गेंद रुक कर आई हो। मोहम्मद अखलाक थे, उसके बाद देखिए बहुत अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने जाकर। एक और अच्छा कैच असद शफीक के फील्डर, कैच उठने का सिलसिला जारी रहा। कासिम अकरम गया, फिर बड़ी बाउंड्री ये आई कम क्लियर हुई है, खासतौर पर ये जो लेग साइड की बाउंड्री है मुश्ताक मोहम्मद एनक्लोजर के सामने, वहाँ पर कई खिलाड़ी कैच आउट हुए हैं पहले मैच में भी। तो अमाद भट्ट अब वापस आ गए हैं फार एंड से बॉलिंग करने को। आज पावर प्ले में 2 ओवर्स इन्होंने किए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे ज़्यादा सेंट्रल पंजाब ने तवज्जो नहीं दी, बड़ी शॉटों के पीछे ज़्यादा गए हैं, कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट्स भी खेली गई। लग रहा था कि शायद जानते थे कि ये अच्छी पिच है, बड़ा टोटल पोस्ट करना है, शॉट्स इन्फोर्स करने ज़्यादा चले गए। हालांकि अब्दुल्ला शफीक, इखलाक टाइम जब करते हैं बहुत उम्दा खेलते हैं, लेकिन आज लग नहीं रहे थे कंफर्टेबल। बल्ले की खासा ऊपर लगी और यहाँ कैच आउट हो गए। न्याजी के साथ मसला रहा है शॉर्ट पिच बॉलिंग पर, वो इतना कंफर्टेबल लगे नहीं रही। रावलपिंडी में किसी हद तक तासुर मिला था और अमाद भट्ट ने उनकी उसी कमजोरी का यहाँ पर फायदा उठा लिया, फॉलो किया उन्हें। बहुत अच्छी बॉलिंग है ये अमाद भट्ट की, नजर आ गया था कि रूम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा बाउंस भी हासिल हुआ, विद इन द बॉडी कराया, जिसकी वजह से टाइम और रूम नहीं मिल पाया। और ये बड़ा झटका सेंट्रल पंजाब का, क्योंकि इरफान खान न्याजी अच्छी फॉर्म में, बैटिंग में अच्छा एतमाद नज़र आता है। 3 बना के वापस जाएंगे सेंट्रल पंजाब 99 पे 6। अभी तक बैटिंग खत्म नहीं हुई सेंट्रल पंजाब की। आमिर यमीन एक और अच्छे ऑलराउंडर हैं, साधन पंजाब से आए हैं सेंट्रल पंजाब में। अब इन दोनों खिलाड़ियों को इस बात का यकीन रखना है कि टीम एक पूरे 20 ओवर्स खेल जाए। ये बात तो यकीनी है कि शोएब मलिक जो हैं अब उनको जाना होगा ऑल द वे। अच्छा खासा तजुर्बा है आमिर यमीन का भी, 1000 रन के करीब है, एक मिस सेंचुरी है और इनकी ये खूबी है कि ये अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, पिंच हिटर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल, और इन्हें देखा कि इनिंग्स बिल्ड करने की जब बात आती है वहाँ भी ये अच्छा किरदार निभाते हैं, और शायद यही शोएब मलिक इनसे बात कर रहे थे जब ये बाहर आए हैं। ये 5 गेंदें जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो रुक कर आई हैं इस मैच में। पहले मैच में विकेट बैटिंग करने के लिए खासी सहल थी और ये देखिए जो ही ये स्टंप से पीछे हटे तो अपनी लेंथ को कम किया, रफ्तार को तेज किया अमाद भट्ट ने, तो यही सीक्रेट था उनकी इस विकेट का। पहले मैच में विकेट बहुत सहल थी बैटिंग करने के लिए, आज़ादाना स्ट्रोक्स
लग रहे थे, दूर से भी बैट्समैन शॉट आसानी के साथ खेल रहे थे, लेकिन यहाँ शायद कुछ वक्त लेने की ज़रूरत है। अब सेट हुए बगैर ज़्यादा दूर से शॉट्स नहीं खेल सकेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन के दाएं जानिब जो हैं ये छोटे हैं नसीम शाह के, हुनैन शाह, ये भी तेज़ बॉलिंग करते हैं, उसामा मीर के साथ बैठे हुए हैं। और इनकी जो रफ्तार रिकॉर्ड हुई थी हाल ही में लाहौर में, ये 140 से ज़्यादा तेज़ बॉलर हैं, यानी ये भी एक 140 के बॉलर हैं। रात जिस तरह एक ग्राफिक दिखाया गया था टीवी पर एशिया कप में, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से उनका बोलबाला है, कोई भी मुल्क जो है फास्ट बॉलिंग में और रफ्तार में पाकिस्तानियों के करीब नहीं है। तो एक ढूंढो हजार मिलते हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल है मरीना। तो यहाँ आपको बहुत से इनामात जीतने का मौका है। किंगडम वैली नेशनल T20 कप, आप ये ऑफिशियल इसके फेसबुक पेज पे जाइए और इनामात पाइए। फास्ट बॉलर्स के लिए मिट्टी बहुत जरखेज है, हमें देखने को मिला है। और जैसे आप हुनैन शाह की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद करते हैं कि अपने भाई के नक्शे कदम पे चलेंगे। और लेग साइड की जानिब खेलने में कामयाब हुए। अच्छा ग्लांस किया आमिर यामीन ने, गेंद को अपने करीब आने दिया। ये होम ग्राउंड है, आमिर यामीन अपने शहर में खेल रहे हैं, इस पिच की तीनत को जानते हैं। 1000 रन भी मुकम्मल किए आमिर यामीन ने T20 क्रिकेट में अपने 105 पर 6। हम बात कर रहे थे तेज़ रफ्तार बॉलर्स की यहाँ पे, और जैसे आपने जिक्र किया कि एशिया कप में जो एक स्टैट दिखाया गया था, पाकिस्तान ने 177 गेंदें की हैं 140 प्लस की रफ्तार में, और दूसरे नंबर पे आ रहे श्रीलंका जिन्होंने 35 गेंदें की हैं, और तीसरे पे भारत मौजूद हैं। बहुत बहुत वाज़ेह फ़र्क है ये, और इसका फ़ायदा भी भरपूर उठाया है पाकिस्तान ने, और आगे भी उठाया जा सकता है, क्योंकि आसान नहीं होता है इस पेस पे जब आपकी गेंद आ रही हो, चाहे आप जितने बड़ी बल्लेबाज हों, ये पेस आपको इम्तिहान में ज़रूर डालती है। यहाँ ख़ास तौर पर जब दोनों एंड से 145 की रफ्तार से बॉलिंग हो रही हो। तमाशाइयों की तादाद में इजाफा हुआ है इस दूसरे मैच के लिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यासिर शाह, और नासिर ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं। और लेट कट किया, गेंद 4 रन के लिए निकल जाएगी। बाउंड्री खासी तवील है, लेकिन गेंद की रफ्तार काशिफ भट्टी से बहुत ज़्यादा थी। अच्छे स्ट्रोक लगाए आमिर यामीन, दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी पेस थी, ये गेंद आई, बाउंस को मिला और नजर रखी आखिरी लम्हात तक। यहाँ पे कभी कभी लग जरूर रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है बैटर्स को, लेकिन जो टेक्निकली साउंड बैटर्स हैं, जब आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं, रन्स भी मिल रहे हैं। अच्छा स्वीप शॉट, यहाँ दूसरा रन बन सकता है, लेकिन शुएब मलिक को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शुएब मलिक जो हैं इस मैदान से, उनकी भी बड़ी यादें हैं। अपना पहला टेस्ट मैच करियर का यहाँ खेला था उन्होंने, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भी पहला ही टेस्ट मैच था इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 2001 में, जब वकार यूनुस पाकिस्तान के कप्तान थे। बैटिंग इनको मिली नहीं थी उस
पिच पर जहां पर 5 सेंचुरियां बन गई थी पहले 2 दिन में पाकिस्तान की। अभी तक बहुत फिट है, अपने आप को इन्होंने फिटनेस के मैयार के बढ़ के ही रखा हुआ है। आपके पास सबकी जन्म पत्री मौजूद है ना। ये गेंद ग्लव्स से निकल गई। ये बॉटम एज था, मुश्किल होता है विकेट कीपर के लिए ऐसे कैचेस पकड़ना। बल्ले से लगती हुई गई, यहाँ ये पैड पर लगी दरअसल। अच्छा ओवर यासिर का 112 पर 6। मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर, बड़ा पुरकशिश इलाका है और यहाँ की सबसे बड़ी सौगात है ये सोहन हलवा। ये जा बजा आपको मिलता है। यूं ही आप गाड़ी रोड से शहर दाखिल होते हैं, आपको हर चौक पर हलवे से भरी हुई आपको दुकानें मिलेंगी और स्पॉट्स। आपने कितने डब्बे ऑर्डर किए? ये भी जब होगा ऑफ डे तो फिर ज़ाहिर निकलेंगे शहर की जानिब। आपने यहाँ क्रिकेट खेलने का इत्तेफाक हुआ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मरीना? हाँ जी बिल्कुल हुआ। पाकिस्तान ए की तरफ से हमने यहाँ पे काफ़ी मैचेस खेले। हमारा स्टे भी जो अकेडमी यहाँ बनी हुई है वहाँ पे था और वहाँ के शेफ़, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन वो बहुत कमाल का खाना बनाते थे। जब भी मुल्तान आना हुआ वापसी पे ये सोन हलवा ज़रूर लेके जाते हैं। सौगात है यहाँ की। स्पेशल फ़ोन आते हैं घर से कि ये लेके आने। अच्छा कट शॉट खेला, गेंद नजरों के बहुत बाहर थी, इसलिए वार करने का मौका मिल गया आमिर यामीन को। काशिफ भट्टी थोड़ा ललचा गए, आखिरी ओवर में विकेट लेना चाहते हैं लेकिन पूरे कंट्रोल में थे, पूरे इख्तियार में थे आमिर यामीन। बहुत रूम दे दिया था आउटसाइड ऑफ स्टंप। इस तरह की पिच है यहाँ पे, यहाँ बॉलिंग करेंगे आप तो आपको महंगा साबित होगा। बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं आमिर यामीन शुएब मलिक के साथ। ज़ाहिर है उनको एक्सपीरियंस बहुत है शुएब मलिक और उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दोनों अच्छी पार्टनरशिप। सिर्फ 18 रन किए लेकिन ये ज़रूरत थी सेंट्रल पंजाब को इस वक्त। एक्सीलेंट कैश, बढ़िया बढ़िया काशिफ भाई बढ़िया। सेंट्रल पंजाब की टीम इससे पहले एक मैच में 79 रन पर भी ऑल आउट हो चुकी है। बैटिंग इनकी जो है इतनी मौसर रही नहीं क्योंकि टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक रन नहीं बना पा रहे। अहमद शहजाद पहले ही आउट ऑफ फॉर्म थे। मिडिल ऑर्डर का जो वाहिद सहारा है वो शुएब मलिक हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। वैसी तवक्को भी की जाती है इतने सीनियर क्रिकेटर से, अभी भी फिट हैं। तो मसला ज़रूर दरकार रहा है सेंट्रल पंजाब को। शफलिंग भी इसी वजह से हुई कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तैयब ताहिर एक और नाम है जो परफॉर्म करते आए हैं। 15 ओवरों के अख्ताम पे सेंट्रल पंजाब 119, 6 विकेटों के नुकसान। बलोचिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनने अपनी धाक रावलपिंडी में भी बिठाई, 15 विकेटें हासिल की। हालांकि ज़्यादातर टीमों का इन्हिसार जो है वो स्पिनर्स की बजाय पेसर्स पर था। पिंडी में 26 विकेटें बलोचिस्तान ने अब तक हासिल की हैं। स्पिनर्स आगे हैं इनके
आशिफ भट्टी और यासिर शाह। बहुत एक्सपीरियंस है यासिर शाह के पास, उन्होंने काफ़ी क्रूशल लम्हात पे विकेटें ली हैं। हारिस सुहेल ने भी 2 विकेटें हासिल की थी एक मैच में। बहुत अच्छा रोटेट करते हैं यासिर शाह, एज ए लीडर बलूचिस्तान को बहुत एतमाद के साथ लीड कर रहे हैं। रोटेशन ऑफ बॉलर्स भी बहुत अच्छा है, फील्ड में भी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। तो खुरम शहजाद को लाया गया है कि वो फिर ब्रेक थ्रू दें यहाँ पर। तो विकेट टेकर हैं खुरम शहजाद, सरप्राइज करते हैं। इस बार अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, लेकिन शुएब मलिक को अगले कदम पर जो है आने नहीं देना चाहते। जिस तरह की पिच है यहाँ पे अच्छा बाउंस है, गेंद निकल भी रहा है कुछ लम्हात पे। पेसर्स अगर अच्छे एरियाज में हिट करें तो यहाँ ऑन दी अप खेलना आसान नहीं है। हार्ड लेंथ हमने पहले मैच में भी देखी, जिस भी बॉलर ने अच्छी पेस के साथ हिट किया है वहाँ खुली शॉट्स नहीं लग पाई। अच्छा खेला नाचिया, इससे 1 रन के लिए शुएब मलिक ने। उनकी कोशिश है कि इस इनिंग्स को डीप लेकर जाएं और आखिर में ऐसी हालत बन जाए जहां पर ये अटैक कर सकें। क्योंकि डेथ ओवर्स में इतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं जो भी बलूचिस्तान ने अब तक क्रिकेट खेली है। जुनैद खान को इसी मकसद के लिए इस टीम में मिलाया गया था। ये किरदार शुएब मलिक को निभाना पड़ेगा। आमिर यामीन एंड पे आके हिटिंग कर सकते हैं, अली असफंद आने वाले, उसामा मीर हैं, लेकिन शुएब मलिक का एक एंड पे रहना बहुत ज़रूरी है। देखो DICC अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के एक यहाँ शुएब मलिक को स्ट्राइक वापस मिला है और इनके पास क्या बाउंड्री ऑप्शंस हैं। लेग साइड में खेलना पसंद करते हैं इस इलाके में। ये जो कॉर्नर है वहाँ पर खासा बड़ा गैप है क्योंकि फील्डर मिड विकेट पर वाइड हैं। इसके अलावा ये पॉइंट और पॉइंट के पीछे भी खेलना पसंद करते हैं। इससे एक फील्डर हैं इस वक्त बाउंड्री लाइन पर, अम्बाद बट बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री पर देखे जा सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गए और गेंद एक टिपक आती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई। बड़ा शानदार शॉट खेला शुएब मलिक ने, इनसाइड आउट, लाजवाब क्रिकेट। फील्ड रीड कर ली थी और ऑफ साइड पे फील्डर अंदर मौजूद थे, सिर्फ एक डीप कवर मौजूद था जो स्क्वायर की तरफ था। हल्का सा अपने आप को रूम दिया और यही उम्मीद कर रहे थे कि खुरम शहजाद आगे गेंद पिच करेंगे, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया। गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इनके पास और बॉलर को हमेशा एक तजस्सुस में रखते हैं अपनी फीट मूवमेंट की वजह से। आज दिन का जो पहला मुकाबला था उसमें 190 रन्स नॉर्थन ने बनाए, 1 रन के फ़र्क से उन्होंने मैच जीता। यहाँ सेंट्रल पंजाब की टीम जो है ये अगर 170 तक पहुँच जाती है तो वो पार स्कोर होना चाहिए इस पिच पर। शायद वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे 170 बनाकर, जो अभी भी मुमकिन है। उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आमिर यामीन और शुएब मलिक को। ये अली असफंद जो हैं ये PGL का हिस्सा बने, ये पहली पिक थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं सेंट्रल पंजाब के। तो ये बड़े यादगार दिन हैं इन क्रिकेटर्स के लिए। इनके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है इतनी कम उम्र में, जब आपको खेलने का मुआवजा भी मिलेगा और आप अपने हम उम्र जो दीगर ममालिक के खिलाड़ी हैं
आप उनके साथ एक्शन में होंगे। जूनियर लीग के मेंटोर हैं शोएब मलिक, जो गुजरांवाला जायंट्स टीम बनी है, उसी टीम का हिस्सा है। अली असफन शोएब मलिक की ही निगरानी में खेलेंगे तो उनको और ज्यादा फायदा होगा। 129 पर 6। आजा पानी लेके आजा आजा आजा। सिर्फ एक घूंट पानी लेकर आता है, बस पानी ले लीजिए। 129 for 6, 4 overs to go from here. And I was mentioning in the previous stint of mine, along with my colleague, that if Malik can stay around, at that time Tayyip Tahir was there, they can take them to a respectable score. But they'll really have to bowl out of their skins to defend anything around less than 150. It's going to be a tough ask on this pitch. And also keeping in mind the kind of form and the team that they have, Balochistan, with Mishan Masood's form, Bangalzai, Hasibullah, and if Asa Shafiq can contribute today, down the order, Ahmad Butt, Junaid Khan. You just notice how Shoaib plays. He just comes across, he's exposed his stumps, but he's just so sure about the line that's going to come at him. He just covers that and plays it on the vacant zone on the onside. Just makes it look so easy. The other batters think, what are they missing and what is that they can't see? Well, they're missing experience, what Shoaib Malik has. He's been around for a long, long time. He's played all around the world. And he's played in the same numbers. Middle order, he plays everywhere. Amir Yamin trying same, but then again, experience missing. So that's Amir Yamin has to stay with Shoaib Malik till the end. If they have to get to that 180 mark, they still can do it, because we know the potential of these two. They can hit big. Such a huge boundary set square. It's a hot day. It's not easy for these cricketers. You earlier saw Shoaib Malik sweating. Even the best of the best is under this heat. It's not easy, these conditions. Oh, just drops short. Just drops short. It was touch and go. Param Shahzad there. The idea was all right. It was a length delivery. Just could not quite execute it. Normally we see Amir Yamin play this shot very nicely, but the timing not quite there. And lucky that it didn't go straight to the person. Look at that, he's sweating. It's not easy. When Shoaib Malik feels it, it means it's really hot. That's a strong zone for Malik. Good stop there. Hussain Talat to come back for 2. Yeah, he'll move around in his crease, Shoaib Malik. Earlier he went towards the offside. This time giving himself room. Just playing around with the bowler. He just knows it where he will be bowling. That is experience. That's good work by Hussain Talat. Amir Yamin, the local lad, he's played all his cricket in this ground. He knows every bit of it, and he is performing. 18 at the moment, but he will have to stay till the end with Shoaib Malik. In the air, will go over fine leg and may just as well go to the boundary. Runs are important.
Junaid not happy, I don't know why, because the field is inside the circle. Maybe he was thinking that the fielder should have taken it, but it was always traveling away from it. It was thick edge. Yeah, that was over his head. That's Khurram Shahzad there. Again, that experience is just moving around. Even the edges are carrying towards the boundary. They never like it. He wanted him to run backwards and try for a catch instead of just start running with the ball. Flat bat shot. Good connection. He's so good at this. Equally good stop down there by Ahmad Butt. The bat was complete too. End of the over. It's 139 for 6. He did well there. He just released the ball at the right time. Yep, I think he's fine. He's done well. He's one of the fittest cricketer around at this level. Ahmad Butt. 17 gone, 139 for 6. Just checking the boundary there. The third umpire. It's clearly not in contact with the ball at the time he touches the rope. In fact, he never touches the rope. It's well done by Ahmad Butt. And officially it's the same call, not a boundary. Just the 2 added to the total. 3 overs to go, 18 deliveries. What more can Central Punjab add? They're 6 down. Amir Yameen will probably try something in this over. No point saving the 4 wickets. Big shot and big runs. That's what you need to do. And what are you waiting for? The right length. That's what they were waiting for. Amir Yameen got it in his zone. And the best part is that he looked to hit straight. That is probably the shortest boundary in this ground. If you're looking to hit big boundaries, look to hit straight. Because the boundaries at square are pretty large. If you can hit this big straight, you're a good player. And as I said, Amir Yameen is a local lad. He's played all his cricket in this ground. He would know it better than anyone else. That's a good start to the over. Is this the over that they're looking for? A big one, maybe a 20 run over from here on. We'll get to that 180 mark. This time again in the air. Again a maximum. That's a brilliant over. Good start for Central Punjab. They might have gone for 4, but nevertheless it's just 10 runs of the first 2 balls. 149 now, Central Punjab. It's a good comeback. Very good comeback. This 50-run partnership. Have a look at that. The length he was looking for again. Placement also perfect. Right between the 2 fielders. Nearly got it for the maximum. This is a good inning by Amir Yameen. The partnership 50 of just 30 deliveries. That will surely give the momentum to Central Punjab. They won the toss, batted first. The batsman gave it away. Almost everybody chipped in, but just gave away their wickets. But this partnership alongside Shoaib Malik, Amir Yameen has done a really good job. She's not done yet. And again, straight. Force not quite there though. But he will take 1 and give the strike back to Shoaib Malik. Yeah, we saw the match, the first match, 190 runs were scored by Northern. And Sindh almost chased that down, just lost by 1 run. How many runs you should be safe on a pitch like this? Well, this score not safe, of course. It all depends how Central Punjab comes out to bowl. Big shot, should be out. Should be out, no, it's dropped. Yasir Shah.
Rarely Yasir Shah messes it up. He was in the air for a long time. How come he didn't judge it? Suddenly realizing ball's dipping on him is Shoaib Malik. It's a big moment. Very big moment. Yasir Shah, oh, what was he waiting for? He was in the air for a long time. Yep, didn't middle it. Stow end of the bat. Had he middled it, it would have gone over the fielder. Good shot. That's gonna go, is it? Yes, it does. Start counting how many it will cost you from here on. "16 runs off the over. That's what I was hoping for, that Central will get 1 over at least of 20 runs. They've got 16. It's pitched up. The way he hit it was forcefully hit. No one to blame but yourself, buddy. 15 scored by Amir Yamin in this over. They've got 16 already. Last ball. Khurram Shahzad will complete his spell. He hits it hard, just a single there. Could have been a wicket for Khurram, but not to be. 44 and his 4 overs and 1 wicket. Khurram Shahzad, 156 for 6. 156 for 6, 2 overs to go, just setting the field right. Junaid Khan will be bowling his last over of the quota of 4. Amir Yamin has been amazing. He's got 16 runs of his bat in the previous over. Got 2 boundaries and a 6 of Khurram Shahzad. He's such a valuable player down the order, 34 of 20. Look at Malik, he started off runner ball, he's 40 of 28. The acceleration is phenomenal. That's the last over. First ball 6, second ball almost a 6. The boundary, then again hits it big and almost should have been taken. That was Shoaib Malik. Dropped by Yasir Shah. Then a boundary again by Amir Yamin. And back live and more runs. Nicely done in the deep by Hussain Talat. The ball was travelling. Yeah, that's excellent captaincy. He's got a deep point and deep extra cover for Amir Yamin. And for this type of shot, he's placed a fielder there. That is good top captaincy by Yasir Shah. He's got the best fielder there fielding. This last 2 overs, how many can Central Punjab get from here on? At least 20 to 25 runs. Get to that 180 mark. They will feel a bit safer then. He just plays it so nicely. It may not look beautiful the way he's played that shot, but how he's selected that gap. He just flat bats everything. That horizontal bat, it sort of sweeps in the air. Target square leg. There is no better batter than Shoaib Malik in this last over. I talk about in the world. He's one of the best middle order batter still around. Have a look at that, just toying around. He realizes that there are 2 fielders, but he placed it right between those 2 fielders. Just magnificent. Have a look at that, down on 1 knee, realizing it is a length ball. No chance for the fielder. That is excellent. Disappointed? So he should be, because he's given away enough runs in his spell. 35 and he's not done yet. 4 balls still to go. 5 runs again coming off the first 2 deliveries. Can they get another 15 or 18 run over? Because they should be looking to get to that 180 mark. They should get it. They should get it from here.
Straight. And should be out. Should be out. Yes, it is. Kashif Bhatti takes the catch. Junaid Khan gets the wicket of Shoaib Malik, who gets 44 of 30 deliveries. Now he's done an important job here, adding those 44 runs. Valuable runs. Again, that toe end, that's what he was looking at. He's not quite timed it. He had to go big. He had to get maximum runs in the last couple of overs. Cannot blame him. But an excellent inning under the circumstances. He came into bat when Central was struggling, and playing that sort of an inning, just 44 or just 30 at a pressure time, is just top class. It's 161 for 7. Osama Mir, the new batsman in. .161 for 7 now. Balochistan won the toss, decided to bowl first. Been getting wickets at regular intervals, but this was one of the biggest partnerships in this innings between Amir Yamin and Shoaib Malik. That's helped them look decent. 161 for 7. Well, the only thing that goes in favor of Central Punjab is that they've got quality spinners in their lineup. First, let's have a look at the wicket of Shoaib Malik. Wanted to go towards mid-wicket area. The timing quite not there. So spin, we've seen in the first game also, it's been difficult to hit away. And looking at the bowling lineup of Central Punjab, they've got Ali Asfan, the left-arm spinner. Shoaib Malik, Qasim Akram, Osama Mir himself, very good leg spinner, especially T20. Qasim Akram, Shoaib Malik. They will have to give them enough runs on this beautiful pitch. They should get to 180. We saw in the first match even 190 was not safe. Sindh lost by 1 run. Went deep in the crease looking for that, eyeing on that mid-wicket area again. That is probably where these tail-enders fancy, where they can get the maximum force out of it. No ball. That will help Central Punjab. It'll be a free hit and an extra run and an extra delivery. 6th no ball by Junaid Khan in this season of National T20. Marginal. Marginal. That's not a no ball. It's very hot. Trust me, it's very hot outside. You've been there at the presentation. It's hot for everybody. Just give him a little margin. It was very close. Very close. It's not a no ball. Anyway, umpire's call is the final call. And that's a shot here. Could have probably played it in the air with a wild swing. It's a free hit. I think he forgot about it. He just played it along the ground. One single, 165 for 7.
Ahmad Bhatt to bowl the last over of this inning. Can they get 15 runs from here on? Can they get to that 180 mark? That's the question. 3 wickets for him already. It's up to Amir Yamin. What can he do? We all know that Ahmad Bhatt is such an excellent death bowler. Down on one knee, should be 4th wicket for Amir Yamin, and he's got it. Ahmad Bhatt rather, I'm sorry. And he is amongst wickets today. 4 for 26 now, Ahmad Bhatt. Wicket number 8 falls as Amir Yamin plays a good knock. Enjoyed it. 37 of 24. Have a look at this. Put everything behind it, but he just has tried to play something from outside off into the onside region. 15 runs, huh? 165 for 8. Not the right shot selection again, Amir Yamin. If you can play so nicely straight, why would you look for that car corner every time? 37 runs he scored. 165 for 8. Sikandar Bakht is happy. Osama Mir on strike. Shot. The boy can hit. Straight into the hands of a fielder. Oh, he's dropped it. How can you spill that, Asad Shafiq? Not only you drop the catch, but also the batsman come back for 2. Also, that would have been the 5th wicket for Ahmad Bhatt. It was a straightforward chance, and for somebody like Asad Shafiq, that's a bad miss. It was a full toss, gentle full toss. Osama Mir missed out on that though. Asad Shafiq, it's not expected of you. Yeah. So got 3 more balls to go in the over. Yeah, you're wondering why wouldn't he hit in the V? Let's go ask him after the match. You'll be at the presentation. Please do that. He won't be there. Who knows? Who knows? He might get an excellent spell and be the player of the match. It was in the air for the longest time. Asad Shafiq, safe pair of hands. He just coughed it up. Again, but this time it won't go to the field as a catch. It just strolls on a couple of bounces. Nevertheless, Osama Mir and his partner come back for 2. Two balls to go in Central Punjab's innings, but they've recovered. Yeah, okay. They've been struggling. 83 for 5, 99 for 6 with that partnership. Shoaib Malik, and along with him was Amir Yamin, has helped them a lot. Slower one, smart bowling there from Ahmad Bhatt. He's got 4 for 30. Could have had 5 had the ball not been dropped by Asad Shafiq, but he's bowled well. Can he finish off well? He's just given 4 runs in the over and a wicket. And the last ball. Such a smart bowler, Ahmad Bhatt. He's got so many variety with him. This is the last delivery. What can Osama do? Can Ahmad Bhatt get a fifer? I really want him to get it because he's bowled beautifully. Full and wide outside the off stump. No, he bowls a slower one again. Double bluff and out. So not only he gets a run out, he also bowls a brilliant over with just 4 runs. 11 short of what Ali wanted. But 169 for 9 is what CP have managed. So 170 to win.
And once again, going back, they were 83 for 5, 99 for 6. I think they've done well to get some respectability to the score. Is it defendable? It will take some good bowling, but Balochistan would be happy. They've done well. Anything in the excess of 180s and 190s can be a different story altogether. That's the last ball. Ahmad just waits, holds, and then gets the middle stump. They had to run for everything. They just gave it away. He could have made it. I think he didn't realize that the ball is going to come to his end. So the second game in here in Multan, and match 18 of the tournament. 170 is the target for Balochistan. Yeah, everybody chipped in at the top, but could not quite play a big inning. Abdullah Shafiq looked good for his 19. So did Faizan for his 26. Shoaib Malik played brilliantly for his 44. And in the end, Amir Yamin scored 37 very vital runs and got his team to 169 for 9 after 20. A wicket for Junaid Khan, Khurram Shehzad, Yasir Shah, Kashif Bhatti. But the pick of the bowler, Ahmad Butt, bowled beautifully, 4 wickets for 30 runs, and that economy is just amazing. Let's have a look at Central Punjab's innings. It was a power play with a few hiccups. Looked a bit rusty. Akhlaq and Abdullah Shafiq. Some shots were good. They were put away on the leg stump. This was a maximum from Akhlaq's bat. But after that, the ball was not coming onto the bat because the timing wasn't right. That was Akhlaq who left. Then, anytime the ball was pitched in the leg stump, it was put away. Nice and easy. But in the good areas, there was trouble. There was frustration for Central Punjab batters and openers. Things were not really good. Wickets were falling, but the run rate was being maintained by the opening slots. This was the wicket that they didn't want to lose. They got rid of Faizan and then Abdullah Shafiq. Wickets started falling with 44 for 2, 57 for 3, and then 61 for 4. And it was just a bit of a test out there for Central Punjab. This was the time when Balochistan was completely in control. Probably thought won't make 150 because the wickets were coming out. This was a bit of a small partnership, Tayyib Tahir, but then he fell like this. And after that, it was Shoaib Malik. This shot probably aiming square leg, but was caught at short fine. And then the partnership of Amir Yamin and Shoaib Malik. This was the good time for Central Punjab. Amir Yamin and Shoaib Malik, they kept on scoring runs. That is what you associate when you have Shoaib Malik on the crease. He tried his level best, got runs everywhere. Even the edges were going for fours. Amir Yamin, this was probably the best shot of the inning. And then tried his best at this boundary. Shoaib Malik was given a life. Yasir Shah could have done a little better. This was a good shot. Forced it towards that extra cover for 4. Amir Yamin was really good, and Shoaib Malik, as we all know, that he knows how to bat in these conditions. He had to go big on every delivery. Lost his wicket. There was no stopping Ahmad, but he just bowled a beautiful spell of bowling. Asif Shafiq taking this catch. Osama Mir tried a few tricks here or there, got a boundary, and was given a chance. Ahmad Butt finishing off in style with a run out. 169 runs is all what CP managed. अमाद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं. 4 विकेट्स हासिल किए अमाद.
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थोड़ा अफसोस होगा कि 5 विकेट्स हासिल नहीं कर सके? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हूँ। मेरा ये बिलीव है, जो चीज़ अल्लाह ने देनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं देनी उसे कोई दे नहीं सकता। सो वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। पिच बहुत अच्छा लग रहा है बैटिंग के लिए, तो क्या प्लान था आपका जब आप बॉल करने आए कि इनटू द पिच बॉल करना है, वेरिएशन यूज़ करनी है? जी बिल्कुल, आई थिंक पिच बहुत अच्छा था, लेकिन चाहे कोई भी पिच हो, राइट एरिया जो है ना वो राइट ही होता है। तो कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें जो है ना वो बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। तो इस पिच को देखते हुए आप क्या मशवरा देंगे अपने बैटर्स को कि कैसे अप्लाई करना है अपने आप को, क्योंकि इतना कम टोटल नहीं है और आप खुद भी अच्छे हिट मार लेते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप तक बैटिंग ना ही आए? नहीं जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरी तो यही कोशिश होगी जो हमारे ओपनर्स हैं वही फिनिश करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में हम लोग जो है, जो क्रिकेट रिक्वायर्ड है आजकल, जो हम उस जो है लिहाज से खेलते हैं, ये नहीं देखते टोटल क्या है क्या नहीं है। हमारा वो प्लान, हम इंशाल्लाह उस लिहाज से जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक बार फिर, बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Right, that was the man of the moment, Ahmad Butt, with us, took 4 wickets. And this is what Balochistan need, 170 runs at 8.5 runs per over. We'll take a break and we'll see you shortly. Welcome back to Multan Cricket Stadium. It's Balochistan taking on Central Punjab for Kingdom Valley National T20 Cup, Game 18. Central Punjab, they opted to bat first, scuffled to find some momentum in their batting. A few starts at the top order, but really couldn't manage. And then the consolation comes from Shoaib Malik, 44 of 30
And Amir Yamin played a brilliant hand, 37 of 24. They managed to reach 169. 170 is the target on this surface. They need some gritty bowling. Balochistan pretty efficient with the ball. 4 for 30. Ahmad Butt was the standout man. Yasir Shah 1 for 26 once again. Bowled really well in tandem with Kashif Bhatti, who finished with 1 for 29. A wicket each for Junaid and Khurram Shahzad as well. They'd be happy that they've restricted Central Punjab to 169. I have a feeling it's about 10 runs below par. What do you think, Marina? Definitely they need to bowl really well because runs are inevitable on this surface. It's a quick outfield. The openers coming out now, Hasibullah and Asad Shafiq. Hasibullah carrying a bit of form. We've seen him make an impact using this platform in the National T20. Accompanied by one of the senior members, Asad Shafiq. Couldn't really get going, but I feel this sort of surface might aid their batting. Good technical players. Young and talented Hasibullah is already making a name for himself in the white ball format. He's the leading scorer in the 50-over format towards the back end of the last season. Started off nicely here, 111 runs in 5 games, 22 the average. Asad Shafiq has seen it all, done it all, mostly in red ball cricket, but 2,345 runs, average of almost 25, and a strike rate of 118. He's really made a resurgent comeback in this format. Amir Yamin with the new ball will start the proceedings for Central Punjab, his home soil. He played his role with the bat. Now it's time to get some early breakthroughs if Central Punjab wants to defend this total. The only thing I want to see is that this is the 4th innings of the day on this pitch. Will the bowlers find some help in terms of low and slow bounce? Play is the call. Slip in place. Here we go. It's guided it towards the third man. Shouldn't be a hard task for Balochistan. They've got a lot of batting, some informed batters as well. But Central Punjab, they need to work hard to get those wickets. Early wickets could make up for whatever they think they fell short of the par score. Amir Yamin is very, very proficient with the new ball. He has his struggles when he comes at the back end of the innings, but with the new ball, generally gets the ball to swing in to the right-handers. Got slip in place. Fine leg is inside the circle. Third man at the boundary, and so is deep square leg. Just keeping everything in check. Qasim Akram, the captain. White ball. Just throwing down the leg side. 3 runs for Balochistan. That in-swinger was misdirected. Like I said, Amir Yamin's strength is to bring the ball back in to the right-hander with the new ball. Generally very steady, and his lines are pretty good. They would have to be careful. They don't need to over-try things or overdo it. Just keep it simple for now. A lot of gap towards the onside. Will just be a single. Hasibullah now on strike, a stylish left-hander. This surface actually suits him. He scored 2 centuries in Pakistan Cup at this ground. Some memories to be cherished about. And also he may enjoy the angle that Amir Yamin would create, because he's very, very strong behind square on the offside. Doesn't have a lot of footwork, but likes to clear his front leg, open up the offside. Just inquiring, and get away with it. Amir Yamin, he needs to be very tight in terms of lines against Hasibullah. He loves to play his shots. Early in Hasibullah's career, but I think people have found out to tuck him up and don't give him any room. There's no reason for that appeal from Amir Yamin. It pitched mile outside the leg stump.
But he's tucking Hasib up. One of Hasib's favorite players is Fakhar Zaman. That's exactly the tactic that's applied against Fakhar Zaman by the top bowlers once they found out that he's belligerent outside the off stump. It's good bowling. Tight line, tight length within the stumps. It's keeping Hasibullah quiet. So far, so good from Amir Yamin. It's a lot of movement in the field. Look at that. He pitched almost another set of stumps outside that leg stump. He's an experienced campaigner. I'm sure he knows the rules. Really surprised at that. Brilliant over so far from Amir Yamin. There's 3 coming off it. 1 more to go. And I think bowlers always want to go up and inquire about ever so slightly chance of having a wicket. Yeah, it's not easy for bowlers, you have to admit. These type of pitches, these formats are all heavily loaded in favor of the batters. And this hot weather as well. Fast bowling is not an easy job. Neat over to start with. Over. First one gone, Balochistan 3 without loss. It's hot afternoon here. Multan, definitely not easy for the players, especially the fast bowlers. We're always talking about how T20 has heavily favored batters. Any rule you would like to change to just aid the bowlers? Wow, there's quite a few actually. If I was a bowler. That's why I asked just one. Well, I don't know if they can introduce players to retire after a certain score, because if bowlers can only bowl 4 overs, batters can only score 50 and just leave the field. But that's just me. I'm not sure. What about you? Come on, batters are always... I mean, the bowlers are always 6 against 1 in terms of batters. They only have 1 chance. You're being really hard on the batters. Qasim Akram now from far end. Spin into the play quite early for Central Punjab. Push hard for the second one. It's not available. Haven't thought about anything changing in favor of the bowlers in a 20-over game. But the other day when in Rawalpindi we had a rain-shortened game with only 5 overs, I was thinking, like we have in Super Over, 2 players, you get 2 wickets and the over ends right there. In a rain-shortened game, in 5 overs, I think 5 out is all out. So people don't have the license to just swing. But I don't know if it will happen. This is onside field for you. Both the sweepers are back on. Remember, we're inside the power play. It's good bowling from Central Punjab so far. Well, if they're not going to swing, where's the entertainment in T20? That's where the bowlers will think that you want entertainment, not at our expense. You make us look like something like bowling machines, just run up and bowl. That's true. Beautifully timed. Picked the placement perfectly. First boundary for Hasibullah. You don't want to give him that much room. Pace or spin. Good use of the crease as well. Went right back. That high to low, the bat swing really cut through the ball. Just waited that little bit longer to find that gap. Beautifully played.
And again, same sort of delivery, same shot, same result. Glorious. Qasim would be disappointed with that, but Hasib's execution has been perfect. This one to the left of that fielder. This time he took it a little bit early on top of the bounce as well. Timing and placement perfect once again. Not sure why Qasim opted to bowl. Haven't seen turn on this surface. Anything on a loser side has always been punished throughout the day. Shoaib Malik just having a word with him. And again, make it 3. That's glorious batting from Hasibullah and not good bowling from Qasim. Not learning from mistakes. Central Punjab skipper is suffering at the hands of Hasibullah. Once again allowing him to free those arms. Exactly carbon copy of the previous one. Hat-trick of boundaries. He's really peppered that point boundary in this over. No change in the field still though. Got away with that. The length was there. Straight to the field. Fruitful over for Balochistan. 2 gone, 16 without loss. Balochistan's tournament so far got 3 wins, 2 losses. That was against ATF Southern Punjab and 1 against Khyber Pakhtunkhwa. They have momentum on their side. This is the reverse fixture of the very first game of the championship where Central Punjab just came up short by just 2 runs. Irfanullah Niazi played that blinder. Haris Sohail has been rested today. Ali Waqas walks in. Asad Shafiq has been a spectator so far. Watching Hasibullah take Qasim to the cleaners. Those are the 3 boundaries. This one was backward of point and those 2 in front of point. Same mistake from Qasim Akram. That's the difference between the surface here and Rawalpindi. And Qasim is young. That's the adjustment they have to make very quickly when we change from venue to venue. Easy single. Hasib is back on strike. Because of extra pace and bounce in Rawalpindi pitch, you had a little bit more margin of error. This one is slower, so it gives plenty of time to the batters. That's why the adjustment needs to be done by the bowlers. Probably quicker through the ears and slightly closer. Not enough room to be offered to the batters. He'll enjoy batting out here. He had a good run at Pindi leg. In sublime form. Been a crucial part of Balochistan. No, just trying to angle it. No feet movement. Watch this one go past the outside edge. The angle taking the ball away from Hasibullah. Feet stuck in the crease really. Talking about that change from venue to venue and the adjustment. This year we're having this championship in only 2 cities. If in future we go to more venues, the adjustment will be required by players on a regular basis, and that will really enhance their skills to another level. Playing on different surfaces really does pose different challenges. It's good bowling from Amir Yamin. Has to do the damage control. Qasim Akram, again, I'm not sure why he opted to bowl himself. There's no turn whatsoever. It was quite evident that runs are there. You've got starts. 52 against Northern. That was a superb inning. Again, couldn't really manage to bag another big innings. Hopefully today. Just the 150 for him, but plenty of starts.
He's only young. In the end, quite easily done. Talking about Hasibullah, when you're that young, you're finding methods to apply in different formats. 50-over format, we knew that he could start slowly, he can accelerate then. He's got the range of strokes to make up for the dot deliveries that he may consume early on. Here with slightly less time, I think he's been a bit hasty after getting starts. But with that 50, it really showed that he's learning quickly and he's finding a method to master this format as well. Today he's got another opportunity. So far so good. Couldn't really time that shot. Hasibullah never appeared to me as the person who would love to hold on his shots. Whenever he came out with a clear intent. If it's there in his zone, he'll go after it. Duration of strike has also another element of his batting. He loves that spot, that opening slot where he can express himself. Just need to be a little bit patient in terms of attacking the bowlers, reading the field. Is this Shan Masood's bat? Must be a good piece of willow because it brought a lot of smiles in the Balochistan dugout. Oh, quick fingers, have to hurry. He literally gave up, Asad Shafiq. All they needed, Central Punjab and Irfan Niazi, was to hit those stumps. 3 was gone, 19 for none. Sam Thalat is definitely not telling his teammates what he had for dinner last night. Well, Asad Shafiq halfway through gave up. He knew he couldn't do anything about it. It was all in the hands of Irfan Niazi. Only had a stump and a half to aim at. It wasn't far off. He did not miss it by much and he knows it. Oh, that's true. No need to run after that. Some confidence will be brought to Asad for that shot. Muhammad Ali has been welcomed with a boundary. Muhammad Ali is probably the quickest of Central Punjab bowlers. Shafiq had a feeling he didn't quite find the sweet spot of the bat. Good enough connection to find the gap, and the outfield has done the rest. Fielder gave it up pretty early, Faizan. Should give confidence to Asad Shafiq. Just trying to enforce shots. We've seen that even in Central Punjab's batting. It hasn't been a case like the early match we witnessed. Probably the ball hasn't been coming on nicely as they expect. Asad Shafiq looks very unnatural when he's looking to bludgeon the ball. 5 wickets for Muhammad Ali. Made a debut in this tournament with a 4-for. Asad is a beautiful timer of the cricket ball. He's at his very best when he plays late under his eyes. There'll be a wide. I have to bowl that again. It's again, you see Asad Shafiq is going hard at these deliveries. Maybe a little anxious. He also had good starts in this championship. Hasn't converted any, hasn't scored a big innings, so probably that is the pressure he's feeling under. This wicket, like I said, is different, so he can take his time.
can force the pace later on, especially when Hasibullah is playing quite nicely. This time straight to the fielder. Do you feel that it has a psychological pressure to make batting look easier on a good surface? On the rise, trying to get on top of the bounce. It is power play as well, so really try to make it count. And sometimes they come out with a plan that they want to be 50 or so in the power play. So when they're not going on that pace, they get anxious. Looks to force the pace on that occasion. He's got a good chunk of that. It went aerial for a moment, but was in the gap. Asad Shafiq has been trying to force that ball away off the back foot. This is the second boundary of the over. A lot of empty pockets there to fetch runs. Risky shot that. Needed to beat that fielder inside the 30-yard circle. And he did that. Another boundary to his name. Looked a little bit uneasy out there. Timing the ball. This time he's picked it up nicely. And it will travel all the way. That's more convincing from Asad Shafiq. That sounded very, very sweet. Probably the best shot of his innings so far. Slightly back of a length. It wasn't a terribly bad delivery, but he planted that front foot. You can do that on that pitch. And went through with the stroke. Look at that. Just transfer of weight and bang. 15 already off this over. One more to go. Never try to overhit it. That's the key to his batting. It's a great timer of the ball. He's not happy. Straight to the fielder. Dot to end the over. 4 overs gone. Balochistan 34 without loss. मुश्ताक अहमद इस वक्त तक ज़्यादा मुतमिन कोच हैं, ज़्यादा मुतमिन ये ड्रेसिंग रूम है मुल्तान का। इनका भी पहला सीज़न है, पहला टूर्नामेंट है मुश्ताक अहमद का इस बलूचिस्तान की टीम के साथ। इससे पहले ये मुल्तान सुल्तान्स के साथ कोच बनकर आए थे यहाँ PSL 5 के मुकाबलों में, जब मुल्तान ने अपने दोनों होम मैचेस जीते थे तमाशाइयों की बहुत बड़ी मौजूदगी में। शुएब मलिक ये भी मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल चुके हैं एक ज़माने में जब ये टीम नई बनी थी। अब ये ऑफ स्पिन करने के लिए आए हैं हसीबुल्लाह के खिलाफ। बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, लेकिन इससे अच्छी इब्तिदा हो नहीं सकती थी। अली 4 ओवर में 34 रन किसी विकेट के नुकसान के बगैर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत बेहतरीन आगाज़ है ये। क्रेडिट देना होगा हसीबुल्लाह और असद को जिस तरीके से बैटिंग की उन्होंने, और रन रेट भी शानदार है। 8.16 रिक्वायर्ड जो है 8.59 है। और ये फील्ड अगर आप सेट करें, काफ़ी चेंजेस करते हुए शुएब मलिक लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन पे भेजा है फील्डर को। ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा हसीबुल्लाह का शुएब मलिक को फेस करना। अच्छा कट शॉट, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग भी। यहाँ जल्दी स्पिनर्स
को लाने पर मजबूर हुए हैं। सेंट्रल पंजाब के कप्तान कासिम अकरम खुद भी उन्होंने एक ओवर किया था, महंगे रहे थे, 13 रन देकर गए। हालांकि रन्स सेंट्रल पंजाब ने भी बनाए थे पावर प्ले में, लेकिन फ़र्क ये था कि तमाम 6 ओवर्स यासिर शाह ने अपने फास्ट बॉलर्स कराए और उनने विकेटें ली। या फ़र्क है, दोनों टीम्स के फास्ट बॉलर्स में फ़र्क है, क्योंकि अगर हम सेंट्रल की बात करें तो इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स हैं, बलूचिस्तान की काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। खुरम शहजाद की अगर हम बात करें, जुनेद खान की बात करें, तो वो एक्सपीरियंस का फ़र्क है। क्योंकि अगर हमने ये देखा है कि जो भी बॉलर यहाँ बचना चाह रहा है, जैसे हमने वेरिएशन की बात की, जिस तरीके से माद भट्ट ने बॉलिंग की, अगर आपके पास वेरिएशन या एक्स्ट्रा पेस नहीं है तो इस पिच पे आप स्ट्रगल ही करेंगे, क्योंकि इतना शानदार पिच है, थ्रू द लाइन हिट लग रहे हैं, और वो चीज़ वेरिएशन और एक्स्ट्रा पेस वो मिसिंग है सेंट्रल पंजाब के फास्ट बॉलर्स में। हालांकि ये सेंट्रल पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर वो इलाका है जो फास्ट बॉलर्स के लिए शोहरत रखता है। दुनिया के नामवर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पंजाब से आए हैं, जिनके बारे में कुछ भी कहना वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। और इस शॉट के मुतालिक भी कुछ ऐसा ही है, लाजवाब हिट लगाई मिड विकेट के ऊपर से और जवाबी वार कर दिया नौजवान हसीबुल्लाह ने शोएब मलिक की ऑफ स्पिन पे। या बिल्कुल रेपुटेशन का ख्याल नहीं रखते हुए कि वो शोएब मलिक को फेस कर रहे हैं, अगर उनके स्लॉट में बॉल है तो उन्होंने हिट मारना है। ये बॉल थोड़ा खिंचा हुआ बॉल था, पीछे गिरा हुआ बॉल था, जल्दी बैकफुट पे पहचान लिया था लेंथ को, बॉल तो ज़्यादा शिफ्ट नहीं किया, बैकफुट पे नहीं गए, लेकिन टाइमिंग इतनी लाजवाब कि बॉल 6 रन के लिए चला गया। ये बहुत ही टैलेंटेड यंग प्लेयर है हसीबुल्लाह, ये फ्यूचर है। पांच फील्डर अभी भी ऑफ साइड में हैं, तमाम इस वक्त दायरे के अंदर हैं। थोड़ा ललचाया हसीबुल्लाह को, हवा दी शोएब मलिक ने, लेकिन बैट्समैन बड़ा शॉट खेलने पर आमादा नहीं थे। मलिक के इस ओवर में 8 रन बने, 5 के बाद 42 पर कोई नहीं। विकेट की तलाश है सेंट्रल को, क्योंकि ये ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम आने वाले बैटर्स पे भी नजर डालें तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। मंगल जही, अली वकास को आज खिलाया है, शान मसूद हम सब जानते हैं, हुसैन तलत, माद भट्ट, काशिफ भट्टी, यासिर शाह तक इनकी बैटिंग है जो कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो आसान नहीं होगा सेंट्रल पंजाब के लिए। विकेट चाहिए, और एक नहीं, दो नहीं, शायद 3 जल्दी विकेट चाहिए अगर मैच में वापसी लानी है तो। अली वकास आए हैं जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, 5 साल में अपना पहला T20 मैच खेलेंगे। काफ़ी अरसे से ये मंजरनामे से गायब रहे हैं, काफ़ी अरसे तक सेहत के भी उनको मसाइल रहे, लेकिन अब फिट हुए हैं। ये बासलाहियत बैट्समैन हैं अली वकास। अली असफन बॉलिंग करने के लिए आएंगे मीडिया सेंटर एंड से। ये पाकिस्तान जूनियर लीग का अभी कल ही हिस्सा बने। 5 विकेट हासिल कर चुके हैं, बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जुल्फकार बाबर की याद दिलाते हैं जब भी ये बॉल करते हैं। जुल्फकार बाबर भी मुल्तान रीजन से खेले काफ़ी क्रिकेट। काफ़ी इत्तेफाक रहा, मैंने भी बहुत क्रिकेट खेली जुल्फकार बाबर के साथ। इनफैक्ट जो फर्स्ट क्लास सीज़न था उसके अंदर भी हम दोनों एक ही टीम में थे। बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर, प्रोबेबली पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर्स में उनका शुमार होता है। आसानी से असद शफीक पहुंच गए यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा साइन है अली असफन जैसे स्पिनर्स के लिए। जूनियर लीग के अंदर सेलेक्ट होना, बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा इन यंगस्टर्स को, और स्पेशली इसकी हमें कल ही देखना शुरू हो गए थे, ड्राफ्ट के बाद ही ऐसा लग रहा था जैसे ये इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा भर गया इन यंग लड़कों में जो सेलेक्ट हुए हैं।
हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे और गुड लक भी कहेंगे इस लीग के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है ये, एक स्टेप फॉरवर्ड है ये इन यंगस्टर्स के लिए। और दाद देनी होगी पीसीबी को इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, इस आइडिया के, क्योंकि आप जितनी जल्दी इस गैप को कम करेंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट को, उतना ही अच्छा होगा इन क्रिकेटर्स के लिए। और जैसे आप मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है और आपको बहुत ही जल्दी एक्सपोजर मिल जाए, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, के फ्यूचर के लिए बहुत शानदार बात है। तो वेल डन पीसीबी, बहुत ही शानदार इकदाम है आपका। शाबाश शाबाश। 3 गेंदें अभी भी बाकी हैं। ये आजमाइश है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बिल्कुल नौजवान है और अभी तो सिर्फ 2 ही फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री पर रख सकते हैं। एक इस वक्त डीप वाइड मिड विकेट पर हैं और दूसरे लॉन्ग ऑफ पर हैं शुएब मलिक। और ये वाज़ेह तौर पर पहुंच गए थे, डायरेक्ट हिट भी नहीं थी और यहाँ पर टीवी अंपायर को मुश्किल होनी नहीं चाहिए। और शायद अंपायर को इतना शक नहीं है, लेकिन क्योंकि वीडियो स्क्रीन पर देर से ये नतीजा पहुंचा था, इसलिए जो है बॉलर को भी रुकना पड़ा ऑफिशियली ये जानने के लिए कि नॉट आउट हैं असद। इस वक्त तो सिचुएशन बहुत आसान है, क्योंकि आसानी से रन्स बना रहे हैं ये 2 बैटर्स, ज़्यादा मुश्किलात हो नहीं रही है, बॉलिंग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रही है, एक्स फैक्टर नहीं ढूंढ पाए सेंट्रल पंजाब अपनी बॉलिंग लाइनअप पे। आज हमने बेंच में देखा वकास मकसूद बैठे हुए नजर आए हमें, उनके आने से शायद थोड़ी बेहतरी आएगी। हवा में खेला लेकिन गैप में खेला और 4 रन्स। हसीबुल्लाह बड़े शानदार और दिलकश शॉट खेल रहे हैं। उन्होंने अपना चौथा चौका लगाया और आज लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में लगे, पावर प्ले का बराबर फायदा उठाया। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो लंबी इनिंग खेल सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में और अपने स्ट्रोक भी नहीं रोकते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। बुरे बॉल का वेट करते हैं, यही क्वालिटी है एक यंगस्टर में होने चाहिए। 6 ओवर्स के बाद 50 बगैर किसी नुकसान के बलोचिस्तान 170 के ताक़ुब पे। ये वो शॉट था जिसकी आप बात कर रहे थे, हवा में जरूर थी लेकिन गैप शानदार तरीके से ढूंढा हसीबुल्लाह ने। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमिटेड, स्किलफुल बैटर नजर आते हैं ये। जब आप ऐसी बैटिंग करते हैं और उसके साथ एड ऑन होता है अगर आप विकेट कीपर भी हैं, तो आप एक ऑलराउंड क्रिकेटर की हैसियत से टीम में शामिल होते हैं, तो उस टीम का जो बैलेंस है वो बहुत शानदार हो जाता है ऐसे विकेट कीपर बैटर अगर टीम में शामिल हो। तो आई एम श्योर बहुत ही शानदार प्रोस्पेक्ट हैं ये बलूचिस्तान क्रिकेट के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। Right arm over the wicket. दाएं हाथ के लेग स्पिनर उसामा मीर, जिनने अपनी विकेटों की 9वीं सेंचुरी मुकम्मल की रावलपिंडी में, अच्छी फॉर्म दिखाई थी। यहाँ ये दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, क्या यहाँ परेशान कर सकते हैं बैट्समैनों को। रन्स बहुत कम दिए थे और यासिर शाह जिन्होंने आज अच्छा कंट्रोल यहाँ दिखाया, उसामा मीर ने रावलपिंडी में बहुत मुतासिर किया था। या वैसे तो उसामा मीर जैसे बॉलर ने ये हर तरह की पिच पे ही करामत साबित हो सकते हैं, लेकिन रावलपिंडी की पिचेस की बात करें वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पेस और एक्स्ट्रा बाउंस था, उसकी मदद इनको ज़रूर हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ कंडीशंस डिफरेंट हैं, यहाँ बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, यहाँ को अपने दिमाग को इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, चालाकी से बॉलिंग करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये स्पेल, ये इनके ओवर इस मैच का डिसाइडिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि यही वो वाहिद बॉलर हैं सेंट्रल पंजाब में जिनमें एक एक्स फैक्टर मौजूद है जो इनको वापस ला सकते हैं इस मैच में। इनका रावलपिंडी में जो इकोनॉमी रेट था वो 6.9 था और हाई स्कोरिंग मैचेस रहे पिंडी में, तो इससे ये खासा मुतासिर कौन लगे। उसामा मीर बड़े अरसे के बाद इन्होंने अपनी बॉलिंग फॉर्म बाजियाब की है।
2015 में ये बेहतरीन बॉलर करार दिए गए थे सुपर 8 T20 कप के फैसलाबाद में। और इस बार विकेट कीपर के गेंद ग्लव्स को लगी और उससे पहले ये बल्ले से भी टकराई थी। बाजार ऐसा लगा था खासी तेजी से गई, ये गुगली थी, बाउंस हुई और विकेट कीपर ने कैच गिरा दिया। मोहम्मद अखलाक जो कि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है। एक बार फिर नजर डालते हैं, सही तरीके से गुगली को रीड तो कर गए थे, ऐसा लगा था कि जैसे एज हुआ है, लेकिन शायद थोड़ा गैप मौजूद था बल्ले और बॉल में। असद शफीक 22 रन पर एक कैच जरूर ड्रॉप किया, लेकिन यहाँ पे उस कैच को अब अपनी बैटिंग से कवर करते हुए, ये शानदार शॉट है, लेकिन उतनी ही कमाल की फील्डिंग। ऐसी कमिटमेंट चाहिए सेंट्रल के फील्डर्स की जानिब से। मैच में अगर कमबैक करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, 116 रन अभी भी चाहिए 78 बॉलों पे। यहाँ पे 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 54 बगैर किसी नुकसान के बलोचिस्तान। यहाँ पावर प्ले तो बलोचिस्तान के नाम रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आगाज किया था हसीबुल्लाह ने। जिस तरीके से अपने फुटवर्क को का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत शानदार है। और जब आप असद शफीक जैसे कमाल के बैटर के साथ बैटिंग कर रहे हो तो आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से इन्होंने ये शॉट मारी, और ये शॉट शोएब मलिक की रेपुटेशन को बिल्कुल खतरे में नहीं लाए। एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल भी शानदार खेलते हैं, तो अच्छा पावर प्ले रहा है ये बलोचिस्तान के लिए। 54 रन 7 ओवर्स में। अंदर थोड़ा अंदर, हाँ बस ठीक है। शाबाश उठाकर खेला और गेंद काफी आगे रह गई। डीप मिड ऑफ के फील्डर से शोएब मलिक खासा पीछे थे। आसान ग्राउंड नहीं है छक्के लगाने के लिए। ये देखिए दावत दी थी, लेकिन इनसाइड हाफ ऑफ द बैट गेंद टकराई, मिडल करने से कासिर रहे। और ऐसा लगा जब ये बॉल डिलीवर कर रहे थे तो अपना होल्ड किया थोड़ा सा, अपने हाथ को थोड़ा वेट करवाया बैटर को, जिस वजह से वो टाइमिंग सही तरीके से नहीं असद शफीक को हासिल हुई। मिलेगा 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 2 रन मिलने चाहिए यहाँ पर, ये आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। बहुत अच्छे अभी तक 4 स्पिनर्स को यहाँ सेंट्रल पंजाब ने आजमाया है। और यहाँ फील्डर कुछ देर के लिए देखते रह गए और गेंद उनसे बाला बाला चली गई। हसीबुल्लाह खान बड़े जारहाना मूड में हैं और अब स्पिनर्स पर उन्होंने दोनों एंड पे वार करना शुरू कर दिए। एक और छक्का लगाया ओपनिंग बैट्समैन ने विद द स्पिन। यहाँ स्लॉट में बॉल मिल गया था उनको, थोड़ा हवा जरूर दी थी बॉल को, लेकिन जिस तरह की फॉर्म और टच में हसीबुल्लाह हैं और जितने स्किलफुल टैलेंटेड हैं, ऐसी बॉलों पे मिस आउट नहीं करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग करते हैं। बहुत सख्त मुकाबला है कि कौन सा यंगस्टर ज्यादा बेहतर खेल रहा है इस टूर्नामेंट में। हसीबुल्लाह की बात करें, साइम अयूब की बात करें, या आज जिस तरीके से हुरैरा ने बैटिंग की है, तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, ओपनर्स हैं, और तीनों ही शानदार प्लेयर हैं। यहाँ कासिम अकरम जो है, इनसे भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कप्तानी का शायद जो बोझ है उनके कंधों पर, उसका असर उनकी कारकर्दगी पे भी आया है। हसीबुल्लाह के लिए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। यहाँ उन्होंने बलोचिस्तान के लिए 2 सेंचुरियां बनाई थी और पाकिस्तान कप का उन्हें चैंपियन बनवाया था। और अच्छा शॉट, हार्ड स्वीप असद शफीक का, 1 रन का मजीद इजाफा। तो देखना ये है कि जो सेंट्रल पंजाब के लास्ट बॉल अच्छा करना है, शाबाश। अगली जो है वो सोच होती क्या है। क्या न्याजी को यहाँ पर 1-2 ओवर्स के लिए इस्तेमाल किया जाए
या मोहम्मद अली को फिर लाया जाए, क्योंकि विकेट लिए बगैर चारा है नहीं। दोनों सेट बैट्समैन इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। 65 कोई खिलाड़ी आउट नहीं। शाबाश 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 समा भाई। Inside out. Cover is coming around. The sweeper. Slight fumble. Direct hit. Hasibullah is dragging the bat. Good technique there from the youngster. Let's see if that was enough to save his day. Because that direct hit looked like it was Khurram Shahzad out there. It's a slight fumble, but the throw came and struck the stumps. Third umpire in action. Here comes the throw. A direct hit would have trouble. The minute the bails move, yeah, he seems to be in. It's closer than what I thought. The fielder was Faizan. Beg your pardon. The ball hit the stumps here and the bat has been dragged in. But we can't see the bails from that angle. Here it is. Have a closer look. I'm glad I'm not the third umpire. Benefit of any doubt should go to the batter. Not out. Very, very close for Hasibullah. Like I said, with the naked eye, I didn't think it was that close. But that's what direct hits can do. Hasibullah. 38 will look to get to his second 50 of the tournament. These two have given a good start to their side. You see the running. Put his head down. Quick turn. The slight hesitation really did for him. It was an easy two if they had gone straight away. Osama's spell will be really important here. Upish, but in the vacant zone. And goes for, oh, he's flicked that back, but is it a boundary or not? The way he's not going after the ball, it seems like he's not 100% about that effort of his. We'll have to go and check this out officially. There's no movements from the umpires. That's Faizan once again in the action. The ball is following him around. His foot is in. Not in contact with the rope. It's neatly done. Very, very neat piece of work there in the deep. Umpires are having a look. But I think excellent work. That should be safe. Just a couple of runs for Asad Shafiq. Anana, one bounce, Anna. At this point, it's even Stevens. Required and current run rate are almost the same. It's around just above 8. 70 for no loss, so 100, exactly 100 required. Need wickets. Got away with that. Osama was a drag down.
He could have hit it anywhere. Osama does carry the threat of a wicket. With Central Punjab looking for wickets, could they go in with a slip? Because Osama is bowled generally with good control. Three fielders in the ring on the offside, just the one sweeper. Almost carried to that short third fielder. Osama is quite tall. He gets that bounce. That's why I was thinking if he can get a slip, put some pressure on the batters. Because they're absolutely cruising right now. It's a good pitch. Driving through the line, trusting everything. Let's say we're in the 9th over at the moment. In fact, 9 are completed. 11 to go. We'll talk about the options available to the captain. 72 Konolas. Six bowlers have already been tried, but they've got plenty of options. And we know that quite a few of them can bowl. Irfan Niazi can bowl as well. And Ken Faizan can bowl a bit as well. So they do have around 8 options in bowling, if you include all the part-timers as well. I think Skipper bowled 1 over in the power play, went for 13. He's an important cog in this wheel. He needs to show more trust in himself. This is Faizan, another part-time option. With the bowling all-rounder, I'm being told by our analyst, where he's batting at number 3. This is the first opportunity for him in the 10th over that he's been called up by Qasim Akram. Just a single there. Skipper Qasim Akram, like Sikandar was mentioning, has plenty of options. The youngster. As we look at this Kingdom Valley, a royal lifestyle. You can go to their Facebook page. There's some exciting prizes to be won. You can be the next winner as well. The royal lifestyle. Yeah, nicely mixing it up. Beaten by lack of pace. This is the 7th bowler, but I was talking about Qasim Akram himself. He's one of their good bowlers, and because he went for 13 inside the power play doesn't mean that he cannot bring himself on. Now with the field widespread open, he can really give some control. Down the wicket charge, beautiful shot. The good part about, or the excellent part about that shot is how he's bisected the gap, the two fielders there. He's got the ball perfectly between the two. Have a look at this, he's carved it. Footwork created some room for himself. Always had that gap in mind. Aerial for a moment, but in the middle of the gap. This is Hasibullah's strength. He's never too far away from a boundary 4. Such is his range and his intent. Inching closer onto that second 50 of the tournament. Important knock. As long as this partnership continues. As you watch Qasim Akram having a little word with Shoaib Malik. And he went to talk to Faizan. Yeah, it was an interesting moment we missed on camera because Shoaib Malik came to Qasim Akram, said something, then Qasim Akram ran to his bowler and shared it. Coming back, running hard, they want to, can they do it? No, Asad Shafiq says no, and rightly so. Yeah, the youngsters under a lot of pressure. As we watch Hasibullah, look at that footwork.
hands through the ball. Like I said, he's clear with his intent. There's a lot of clarity in his game plan. He attacked Fazan on the first delivery of the over to get that boundary. Third delivery rather. Early enough in the over to put him under pressure for the rest of the over. That's nicely done by Asad Shafiq. Cheeky, smart, very T20-like. 4 more. These two have complemented each other very, very well. Asad Shafiq moved very early, got himself into very good position. The ball was right in the slot for that kind of stroke, and the execution was top class. At the moment, Central Punjab is chasing leather, and the young skipper doesn't know what's hit him. Baptism of fire, captaining this big side in this big event. To be honest with you, he's looked out of place. He's a very talented cricketer. This task is just beyond him at this stage, one would feel. 11 of the over at the halfway stage, 83 for none. What do you think Abdul Razak will be thinking, Sikandar? He's thinking about the final tomorrow. A big game for Pakistan. I'm pretty sure he's thinking about his side. This game is not lost. What he's probably thinking, and I can only assume, which bowler can get them the breakthrough right now. Options are plenty. They need to create inroads somewhere. Osama Mir. Big shot, but very straight. Fielder won't cut it off. One bounce, boundary. So that's the idea. That's the kind of game plan Balochistan has. Attack on the first ball of brand new over. Put the ball on the back foot. So Shafiq, a little ungainly. Remember, he's a very good touch player. Once again, he picked the right spot and got the desired result. Pressure is back on Osama. Now he would be looking to get out of this over rather than making any inroads that Sikandar was talking about. Running hard. Placement was excellent. Just the soft hands, and as soon as he played, he knew he wanted to. This is superb cricket from Balochistan. Been working hard, Balochistan. Only twice the first ball has been a dot in this innings. Otherwise, both Asad Shafiq and Hasibullah have been very smart, clever, and ruthless at times. And positioning, but found the fielder, captain there. He knows there was an opportunity to get a boundary. Sometimes you middle the ball and straight to the fielder, you just feel that an opportunity's gone begging. Race is on. Who will get to that 50 first? Again, running hard. Can they get two? Can they get two? No. They decide against it. So it's nice, start an over with a boundary, then ease your way through with a couple and a single and try to attack the last two balls and get around 8 runs in the over. They already got 7. A boundary here would be a bonus. Oh, extra bit of bounce there. Did he get a nick? The way Akhlaq was scrambling. Extra bounce there. No, nothing doing. This is Osama. He's been pretty consistent throughout this tournament, Osama Mir. Often he hasn't had enough runs to play with. Slight misfield and allows them to come back. That's how sharp you should be. Game awareness. What's happening in the deep with the ball. 11 gone, 92 for no loss.
Look at this comparison. It couldn't be far off. 84 for 5. 92 for none, Balochistan. And Punjab's start was disastrous. Balochistan haven't given them a sniff in this run chase. Is the KPK unit? I think they've just had their nets, or they're just heading to the nets, I think. By the amount of sweat you can see on their backs, probably they have just finished their session. Top of the table, very slick unit of new KPK, and there's some crowd here today. Hot afternoon, but they found some comfortable seats in the shade here in the Fazal Mahmood enclosure to the right of that grand Inzamam ul Haq pavilion. We hope to see more and more of these fans come in. Tomorrow evening is the big game, Pakistan playing the final of Asia Cup against Sri Lanka. Once that event is done, I think a lot more people will head this way, and we'll have some evening cricket and some cricket under lights here in a couple of days at the Multan Cricket Stadium. But for now, Central Punjab's struggle to break this opening partnership continues with Faizan. KP coach Abdur Rahman having a word with Shan Masood. There's some connection between the two. Yep, you guessed it right. Multan Sultans, they're both associated with that franchise. Obviously in Multan, which is their home turf. And the good news is that Multan is likely to host some games this year in PSL. That has been announced already. So they will have home advantage. Well, there was massive crowd here when the last time PSL games took place. I remember Riley Rousseau was like surprised to see that many number of people and the kind of support they were giving Multan Sultans. Huge. And tell you what, this ground is not like in the heart of the city. It's a bit out, so it's a bit of a travel. But people come in big numbers to watch the game, a good game of cricket. The Stars, that's a good shot. He may not get a boundary, but he's placing them so perfectly for easy twos. This is a huge field, so the pockets are quite big. The ones towards extra cover, mid-wicket, backward point, fine leg. Look at those vast spaces, plenty of gaps. It's 72 meters all around. Somehow it seems bigger than that. Get these mid-wicket pockets here, can easily push the ball into the gap and call for two. The other thing you can see, the beautiful outfield. It's an absolute picture, an absolute carpet here. Good for fielders as well to throw themselves around. No excuse for any fumbles here on this outfield. Yeah, it was too close to that off stump. Every time you play that shot, you play with a lot of danger of losing your wicket. That's mighty close. The difference to this stroke and the one he executed nicely a couple of overs ago, he got really still and he was waiting for that ball. But on that occasion, he was still on the move as the ball passed him. That's why he couldn't make any contact. Big shot and gone. Finally trying to get those big shots going. He has thrown his wicket away just around when he was 47, Asad Shafiq. It's not his style of play, but he was fancying a big shot with the military medium pace of Faizan, and he's lost his wicket. So finally, something to celebrate for the Central Punjab team and bowlers. Hit it low on the bat. Asad Shafiq was looking to clear. He's going for the sixer.
On that occasion, the timing eluded him. Nonetheless, made a very, very nice hand. 47 of just 34. Balochistan 96 for 1. The Central Punjab unit in a huddle. Shoaib Malik in the mix. Young Qasim Akram is learning the hard way. You have to say that. Balochistan on the other side, they're pretty relaxed. Mushtaq Ahmed never short of a word. What a character he is. It's a wonderful leg spinner. This is Abdul Wahid Bangalzai. He's making a name for himself, this youngster from Balochistan. That strike rate and average will go up. Mark my words for that. It's 375 runs, the best of 58 not out. With that single, Hasibullah will keep strike. In fact, Bangalzai will keep strike. It's 97 for 1. Asad Shafiq, 3 runs shy of his 50. Probably was looking to bring it with the glory stroke. Central Punjab finally celebrate, but you can look at the body language. Not a lot to celebrate. Really hard task for them. 12 gone, 97 for 1. बलूचिस्तान को बहुत अच्छा आगाज मिला है, लेकिन सेंट्रल पंजाब की टीम अभी भी ये खेल से बाहर हुई नहीं है। यहाँ अगर एक आध वो चोट और पहुंचाते हैं अपनी हरीफ टीम को और 2 नए बैट्समैन विकेट पर हों, खासतौर पर हसीबुल्लाह की विकेट मिल जाए, तो फिर जो रन बनाने की जो दरकार औसत है वो ज़ाहिर और बढ़ जाएगी, वो 10 की तरफ चली जाएगी। ये पैड पर लगी है, खासी आगे पिच हुई थी गेंद, लेकिन अंपायर ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। लेग बाई देने पर इत्तेफाक किया नासिर हुसैन सीनियर ने। यहाँ दरअसल गेंद बल्ले को लग गई थी। यहाँ 50 रन भी मुकम्मल हो गए हसीबुल्लाह खान के। यहाँ छठा चौका लगाया, 2 शानदार छक्के भी लगाए हैं हसीबुल्लाह खान ने। दूसरी 50 इस सीजन की हसीबुल्लाह की, बल्ले से लगा था और इन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की। और अब एक बार फिर सवाल कर रहे हैं और एक बार फिर बच जाएंगे, लेकिन ये गेंद बाउंड्री तक जाएगा नहीं। रन अभी काफी दरकार है बलूचिस्तान को। सेंट्रल पंजाब अगर जैसे आपने कहा 1-2 विकेटें यहाँ गिराने में कामयाब हो जाए तो कुछ हो सकता है। ये काफी क्लोज मामला लग रहा था। बैठे हुए थे जब गेंद पिछली टांग पे खाया, लेकिन नासिर हुसैन का फैसला उनके हक में गया। ये अच्छी शॉट है।
अगर हम वो रिप्ले दोबारा देख सकें, ये जो आखिरी एलबीडब्ल्यू की अपील थी ये काफी 19-20 लगता था। स्ट्रोक्स अब खेलना चाह रहे हैं हसीबुल्लाह ने सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद। उसामा क्या एक विकेट ले सकते हैं अपने इस कोटे को पूरा करने से पहले तक, जिसकी अशद ज़रूरत है सेंट्रल को। ये देखिए 2 गेंदें पहले ये बल्ला बिल्कुल नहीं टकराया था और यहाँ पर इतना ज़्यादा गेंद के बाउंस होने का भी इम्कान नहीं था, इसलिए विकेट कीपर चिल्ला उठे थे। फाइन लेग के ऊपर खेलने में कामयाब हुए और यहाँ पर मजीद रन्स बन गए। दूसरा चौका इस ओवर से आया, तो उसामा का जो आखिरी ओवर था वो निस्बतन महंगा साबित हुआ, 111 पर 1। सख्त गर्मी है आज मुल्तान में और इसका अच्छा खासा अंदाज़ा आपको हो रहा होगा इन चेहरों को देखकर भी। खासा वक्त फील्ड में गुजारा है, तो आपको 20 ओवर फील्डिंग करने के बाद ऐसा ही लगता है जैसे आप पूरा दिन जो है वो फील्डिंग करके आए हूँ। यहाँ पर अब साए जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। यहाँ सेंट्रल पंजाब की टीम पर भी ये साए गहरे होते जा रहे हैं। दरअसल इन सायों ने पीछा छोड़ा नहीं रावलपिंडी से मुल्तान तक सेंट्रल पंजाब का। अब देखना ही होगा सेंट्रल पंजाब में से कौन सूरज बन के उभरता है ये साए खत्म करने के लिए। एक ज़माने में ये मुल्तान ये महर परस्तों का ही शहर था, अब से हज़ारों साल पहले कहा जाता है। यहाँ सूरज बहुत पसंद किया जाता था इस शहर में। तो परेशानियां हैं, 42 गेंदों में 59 रन की ज़रूरत है। मोहम्मद अली बॉलिंग करने के लिए वापस आ गए हैं, जिनका इकलौता ओवर खासा महंगा था, 15 रन उसमें देकर गए थे। ये बड़ी उम्मीद है फास्ट बॉलिंग में इनकी। यहाँ सेंट्रल पंजाब इंतजार नहीं कर सकता कि बलूचिस्तान के बल्लेबाज कोई गलती करें और विकेट हासिल करें, कोई जाल बिछाना पड़ेगा। इस तरह बंगल जई खेल रहे हैं साथ हसीबुल्लाह, शानदार इनिंग्स खेली इन्होंने, ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा। एक ही विकेट गिरी अभी तक, बैटिंग बहुत आनी बाकी है। बात कर रहे थे मोहम्मद अली की, अच्छे फास्ट बॉलर नज़र आए हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिली नहीं यहाँ पे पिच पे। अच्छा यॉर्कर। सेंट्रल पंजाब की टीम जो है वो आउटराइट पेस के बगैर ज़्यादातर मैचेस खेलती रही है। मोहम्मद अली को भी शुरू के मैचेस पिंडी में नहीं खिलाए गए थे, इन्हें बेंच पर बैठना पड़ा, मीडियम पेसर्स पर इन्हें सार किया गया। हालांकि इनके पास पेस है, बेंच पर हुनैन शाह हैं और उनके अलावा अहमद दानियाल, वो तो विकेटें भी ले रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये चिराग तले अंधेरा हो, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते अपने वसाइल को सेंट्रल पंजाब के जो करता धरता है। हो बिल्कुल आखिरी लम्हे पर कनेक्ट करने में कामयाब हो गए। हसीबुल्लाह ने खतरा जरूर मोल लिया, लेकिन उसी में सिला भी था, 4 रन। जब आप खतरा लेंगे ऐसा और इतने सेटल होंगे तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है। अच्छा गेंद था, इस पे आप कोई दोष नहीं दे सकते मोहम्मद अली को।
लेकिन बल्ला कनेक्ट सही टाइम पे करने में कामयाब हुए, वरना ये नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। रन्स नहीं रुकेंगे यहाँ पे, बॉलर्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कासिम अकरम को सोचना पड़ेगा कि बल्लेबाजों के अगेंस्ट कौन से ऐसे बॉलर्स लगाएं जो विकेट हासिल करके दे सकें उन्हें, वरना ये गेम जो है वो उनके हाथ से निकलती जा रही है। लेग साइड में डीप स्क्वायर लेग से इस वक्त आगे लाया गया। वहाँ पर अली असफन थे, इस वक्त मिड विकेट डीप है। लॉन्ग ऑन पर इरफान न्याजी हैं। अच्छा शॉट, रन एक ही मिलेगा हसीबुल्लाह खान को, जो बड़े एतमाद से बैटिंग कर रहे हैं। बंगल जई जो हैं उन्होंने जारहाना अंदाज अपनाया है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने विकेटें भी गंवाई हैं, लेकिन शायद T20 की तीनत को वो समझने लगे हैं कि वो ख़तरा मोल लेंगे। ये देखिए 54 रन्स की उन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी। ये पार्टनरशिप थी उनकी सेंट्रल पंजाब के खिलाफ जब ये पिंडी में खेले थे। दूसरे एंड पर शान मसूद थे, दोनों ने निस्फ सेंचुरियाँ बनाई थी और सेंट्रल पंजाब को उस मुकाबले में शिकस्त हो गई थी। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी पिछले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न में। लाहौर आकर वहीं से इनको ज़्यादा संजीदगी के साथ लिया जाने लगा। अच्छे बैट्समैन हैं। अपना अंदाज इन्होंने ज़रूर बदला है और उसकी एक ये वजह भी हो सकती है कि T20 फॉर्मेट में ज़रूर सेट होना है, लेकिन जब इतनी बैटिंग दस्तयाब हो तो टॉप ऑर्डर में जाके आपको एक खसूस रन रेट के साथ खेलना पड़ता है। अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं, अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट का। जोहिब मलिक कुछ नसीहत ज़रूर कर रहे हैं मोहम्मद अली को। अच्छे यॉर्कर्स कर रहे हैं इस ओवर में। इसी लेंथ पर एक बाउंड्री भी लगी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोशिश पूरी है कि गेंद को रिवर्स कराया जाए, क्योंकि जो स्क्वायर है इसके जो अतराफ में पिचेस हैं इस विकेट के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास नहीं है। यहाँ मुल्तान स्टेडियम में कई बार गेंद को हमने रिवर्स होते हुए देखा है और ऐसा मुमकिन है आइंदा जो मैचेस होने वाले हैं। कल जो मुकाबला है ये दो पिचेस, ये चौथे नंबर की जो पिच है वहाँ पर खेला जाएगा, जो आपको ज़्यादा तैयार हालत में लग रही है। यॉर्कर के बाद स्लो डिलीवरी पर बीट किया हसीबुल्लाह को। अच्छा फाइट बैक किया अली ने इस ओवर में 120 पर। ये अहवाल बलूचिस्तान का बैटिंग में हसीबुल्लाह नॉट आउट 60 पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं इस टारगेट के ताक़ुब में। असद शफीक ने भी अच्छी खेली, 3 रन सिर्फ दूर थे अपनी निफ सेंचुरी से। अली वकास की आज शमूलियत हुई है 11 में। शान मसूद दस्तयाब हैं, हुसैन तलत, अमाद भट्ट, काशिफ भट्टी, यासिर शाह। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन कोशिश ये होगी कि वहाँ तक जाना ना पड़े। हसीबुल्लाह अच्छा फिनिश कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा। मुतमईन बेंच होगा ये बलूचिस्तान का। यहाँ पिछले चंद मैचों में क्योंकि रन्स नहीं हुए, इससे दबाव होता है बैट्समैन पर दौरान टूर्नामेंट अपनी फॉर्म को बाजियाफ्त करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल फॉर्मेट है। ना सिर्फ ये कि कम बैक करने के लिए, डेब्यू करने के लिए शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कम बैक करना, फॉर्म में कम बैक होना, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता। लेकिन अच्छा लग रहा है कि मंगल जई जो हैं वो ज़्यादा परवाह किए बगैर खेल रहे हैं। दूसरे एंड पर सेट बैट्समैन उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम कल जो एशिया कप का फाइनल है उसमें वो आ जाएंगे फॉर्म में वापस।
और बाबर आजम अब इतने बड़े बैट्समैन बन चुके हैं दुनिया में कि उनकी कामयाबियों पर या उनकी सेंचुरी निस्फ सेंचुरी पर किसी को हैरत नहीं होती, उनके रन्स ना बनाने पर हैरत होती है। तो ये इससे भी जाहिर होता है कि वो इस सेहत के कितने अजीम बैट्समैन हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया कि अब यकीन नहीं आता कि जब उनका बल्ला बोलता नहीं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी उन्होंने। कमाल की बैटिंग करते हैं जब फॉर्म में हो। फॉर्म में है वो, बस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। उम्मीद करते हैं कि फाइनल वो यूं कहना चाहिए रन्स में वापस आ जाए। रन्स में बिल्कुल। मरीना, आपको फ़र्क क्या लगा है माइंडसेट का बलूचिस्तान और सेंट्रल पंजाब के जो दोनों मैचेस हुए हैं अब तक? बालादस्ती रही है बलूचिस्तान की? बालादस्ती ज़रूर रही है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज सेंट्रल पंजाब के पास नहीं है, लेकिन माइंडसेट और वही बात के कुछ बैट फॉर्म कैरी करते आ रहे हैं। एक प्रेशर ज़रूर है इन पे। जहाँ तक मुझे लगता है टेक्निकल बैटर्स हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं नज़र आ रही। इनफोर्स जब भी करने जाएंगे ऐसे प्लेयर्स तो मुश्किल हो जाती है, जबकि बलूचिस्तान का हर एक बल्लेबाज जो है वो फॉर्म में है। एक ये भी मुझे साइकोलॉजिकल एज ज़रूर लगता है कि अब जैसे आज मुल्तान की पिच हमने देखी, पहले मैच में 190 स्कोर हुआ, तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ पे जाके बड़ा टारगेट पोस्ट करना ही है, और जब आपके बैटर्स फॉर्म में ना हो तो वो एक डबल प्रेशर उन पे आ जाता है। फिर फाइनल की जानिब खेलने गए और कैच गिरा दिया। अच्छी कोशिश की अली ने, गेंद उनके उल्टे हाथ की तरफ थी और तकरीबन ये बाएं हाथ लग चली थी। 2 रन हासिल किए हसीबुल्लाह। ये मॉडर्न शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। ये वो चांसेस हैं जो सेंट्रल पंजाब को लेने पड़ेंगे अगर ये टारगेट डिफेंड करना है। टाइम मिल गया था, एक हाथ से कैच करने का इन्होंने फैसला किया। अगर दोनों हाथ लेके जाते शायद ज़्यादा आसानी से ये कैच पकड़ सकते। ये गिरा दिया है, ये काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। आमिर यामीन का दिल भी टूट गया। अच्छी बैटिंग की आमिर यामीन ने। अब शुएब मलिक के साथ जो इनकी पार्टनरशिप थी उसी ने सहारा दिया सेंट्रल पंजाब को कि अब तक वो खेल में हैं। 62 रन की पार्टनरशिप हुई थी, क्योंकि एक मौके पर 99 पर 6 विकेटें गिर गई थी। यहाँ ये आप देख सकते हैं मोहम्मद अली ने कोशिश की थी, लेकिन मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जो फास्ट बॉलर्स जो हैं उनसे कम ऐसी तवक्को की जाती है कि ऐसा करिश्मा कर दिखाएं। लेकिन आपको एंटिसिपेट करना चाहिए इन पोजीशंस पर। आजकल कैचेस जो हैं अक्सर आते हैं आपकी तरफ। हाँ जी, अब कोई सेफ फील्ड पोजीशन रह नहीं गई मॉडर्न डे क्रिकेट में। अच्छा ओवर आमिर यामीन का, जिसमें उनको विकेट मिल सकती थी। 7 रन उन्होंने दिए 127 पर 1। पंद्रह ओवरों के बाद ये सूरत हाल है दोनों टीमों की। सेंट्रल पंजाब 119 पे 6 विकेटें गंवा चुका था। बलूचिस्तान 127 पे सिर्फ 1 का नुकसान उठाना पड़ा इन्हें। फिलहाल लग ये रहा है कि बासानी बलूचिस्तान इस हदफ को चेस कर पाएगा। चांसेस निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल पंजाब के लिए बिल्कुल एक वन साइडेड गेम हो, लेकिन चांसेस को अवेल नहीं किया जा रहा। इस तरह की पिच है जहाँ पे बैटिंग कदरे आसान है।
फील्डर्स को अपने बॉलर्स को बैक करने की जरूरत है। आहिस्ता गेंद थी, गैप में खेलने में कामयाब हुए, 2 रन हासिल किए बंगल सही ने, जो अपने स्ट्रोक्स खेलते चले जा रहे हैं। ये मैच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल पंजाब के हाथ से वो सरकता जा रहा है। अभी तक ये मुसलसल पलड़ा भारी रहा है। बॉलर्स बलोचिस्तान की विकेटें लेते रहे और जो बैट्समैन हैं उनने शुरू में ही पार्टनरशिप्स की हैं, जिसके सेंट्रल पंजाब की इनिंग्स में फुकदान था। लगता है कि ये बाल बाल बचे हैं, बाउंड्री बचाने में कामयाब हो गए। यहाँ अंपायर तारिक रशीद का भी यही ख्याल है। टीवी अंपायर ने जो बाउंड्री के फील्डर थे उन्हीं की तायद की है। जमीर हैदर टीवी अंपायर हैं। एक और शानदार एफर्ट फील्ड में, बाएं हाथ पे जाना पड़ा, लंबी दौड़ लगानी पड़ी और 2 रन यकीनी बचाए हैं इन्होंने। बंद इस तरह की फील्डिंग बहुत जरूरी है और मैं अभी यही बात कर रही थी कि बॉलर्स को बैक करना पड़ेगा यहाँ फील्डर्स को। यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो आउटफील्ड है ये उतनी तेज नहीं है जितनी कि रावलपिंडी में थी, और ये खासी बड़ी आउटफील्ड है। अरीना बड़ा है, इसलिए जो फील्डर्स को यहाँ बड़ी मेहनत करना पड़ती है। आप बहुत थक कर जाते हैं यहाँ जब आप इनिंग्स खत्म होती है मुखालिफ टीम की। और अब शुएब मलिक की बारी है। उन्होंने गेंद पर हमला किया और खासा आगे चले आए थे। दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का पहले भी फुकदान रहा है। रनिंग के मामले में हसीबुल्लाह दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन बंगल जई जो है वो देख रहे थे कि शुएब मलिक जो हैं वो अटैक कर रहे हैं गेंद की तरफ। बहुत जल्दी से लपके थे गेंद पे और क्विक रिलीज किया, जिसकी वजह से दूसरा रन बचाने में कामयाब हुए। लेकिन अगर बॉलर ने पकड़ के थ्रो की थी, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे अपनी क्रीज में। दाद देनी चाहिए यहाँ शुएब मलिक को कि पूरी तरह फिट हैं। खेल के इस सेशन में वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं, बाउंड्रीज बचा रहे हैं। ये डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के मुकाबले जो हैं 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं मुत्तहदा अरब इमारात में। हमारी नेक तमन्नाएं जो हैं वो साथ हैं डेफ क्रिकेटर्स के। पाकिस्तानी डेफ क्रिकेटर्स को भी शोकेस करने का अपना टैलेंट मौका मिलेगा। दुनिया के तमाम ही ममालिक के जो क्रिकेटर्स हैं, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका की टीमें होंगी, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा भारत, अच्छे मुकाबले होंगे। दरअसल 9 अक्टूबर के दिन इख्तितामी तकरीब होगी, उससे पहले फाइनल खेला जाएगा। लेकिन यहाँ अगर सेंट्रल को सेमीफाइनल में जाना है इस नेशनल T20 कप क्रिकेट टूर्नामेंट में, तो उन्हें विकेट की ज़रूरत है। और शुएब मलिक को कुछ देर के लिए आस लगी थी, लेकिन गेंद उनसे बाला बाला चली गई। ऑफ स्टंप के बाहर से पैच कर लिया बंगल जई। आज फिर आड़े हाथों ले रहे हैं सेंट्रल की बॉलिंग को। जब भी इन्हें मौका मिला है बाउंड्री के लिए ये गए हैं और खेल जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं। फ्लोर 1 जरूर की थी, लेकिन लेंथ और रूम इतना दे दिया था जिसकी वजह से बआसानी ये छक्का लगाने में कामयाब हुए। 12 रन दे चुके हैं इस छक्के को शामिल करके। एक गेंद बाकी है इस ओवर में। लेग कटर करने के लिए गए, गेंद ऑफ द विकेट ग्रिप भी नहीं हुई, ज्यादा आगे भी गिरा बैठे।
ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है मोहम्मद अली की, यॉर्कर करना, वाइड यॉर्कर 139 पर 1। .31 needed of 24. Central Punjab has dragged this game into the last third. At one stage it looked like Balochistan may get there soon enough, but with Central Punjab slowing up the progress a little bit after the fall of Asad Shafiq's wicket. But I still think Balochistan is in the driver's seat. This equation should not worry them with 9 wickets. Everybody's had a good day. What about you, Ali Yunus? Wonderful. It's been a good day of cricket, I tell you. Especially the first game, Sindh Northern game, excellent game. And now even this one, I would have liked Central to score maybe 20 runs more, 190 if they could get. It would have made a game out of it. But at the moment, it's way too easy for this Balochistan young side. But how well this young lad Hasibullah has played, 65 or 49, just single-handedly taking the game away from Central Punjab. Slight hold up in play in the middle. Very, very content and confident looking camp. Balochistan camp. They've really had another good show in this tournament after winning the Pakistan Cup last season. Talk about Hasibullah, really good knock, because he's been getting starts but he hadn't made big contributions. But you have a feeling throughout the tournament he's learning the art of grinding out a T20 knock. We've seen his prowess in the 50-over game. We haven't seen him at the first class level yet, but even in this format you could tell that he was getting closer to a method how to prolong his innings. And today he's done it. He's been on top of the required run rate all innings. And he's ready to see his team through. Unconventional at times, but very well drilled. He's brave. And at this age, if you're this brave, it's a very good sign for the team you play for. He's technically very correct, and alongside his wicket-keeping skills, I think is an excellent all-round cricketer, this young lad. From Balochistan, the local lad. It's definitely one for the future, for sure. Both of them, actually. Bangal Zai also. Remember the 200 that we witnessed at Gaddafi Stadium? It's beautiful. Big shout. The angle was taking it down. You have to wait for the umpire's signal. Leg by. But talking about these two, these are wonderful optics for Balochistan cricket. Very, very talented youngsters. They're carrying their team in the domestic competitions. And despite being so young, as we see this one angling down, this is not the first time they've done that. In that Pakistan Cup final, they both were at the forefront when the victory was achieved. Once again, getting closer to that victory target today. Swing and a miss. Yeah, Central Punjab, I'm not sure about their team selection, to be very honest. Ahmed Daniel, pick of the bowlers in the first 3 games, dropped. And we haven't seen him again to play in this tournament. They've got Waqas Maqsood on the bench. I think we'll see him in action in the coming games. Because on a pitch like this, you need a pacer. This one is lofted. There is a fielder, but he can't do much, because that has sailed over that long on boundary for a 6 to Hasibullah. Unconventional, like I said. He's tall, got long levers. Look at that, came right across his stumps. Just flat batted it from way outside the off stump. Incredible stroke. But this is the kind of talent he has, the kind of confidence he has.
This one is glorious. But did it carry? Yes, it did. Well, it sounded very, very sweet off the middle of the bat, but it went straight to Ali Aspan. Took a very good catch. Looking into the sun, it wasn't an easy catch, but he will take it. And Hasib's knock has come to an end. Timed it too good, I think. The placement was right in the hands of the fielder. He wanted to go with that extra cover. That's a good catch by young Ali Asfan. In the second attempt, he grabbed it. Well, nevertheless, a fantastic inning. 72 of 53. And we can surely say that this is a match-winning inning. 147 for 2. Against the run of play, Hasibullah lost his wicket. That brings Shan Masood to the middle, the informed man. Now 32 years of age, 29.51. Look at that average, 28. Strike rate, 126. 20 half centuries and 1 century. He's really hit purple patch in his career in the last couple of overs. Bangalzai is on strike. 2 straight. Did he get a bat on it? We'll have to wait and see. Amir Yamin did well. And Shan Masood is very, very quick. 3 runs. Yeah, look at the difference. As soon as Shan Masood has come, he's making Bangalzai run. That there was 3 to ask. Umpire will have a look at it again because Amir Yamin was quite close to the boundary line. Nevertheless, 17 gone, 150 though. And that's how Hasibullah went. He wanted to go over extra cover and a good catch in the second attempt. He's still waiting maybe, or umpire is giving it. 3 runs. First day of Multan leg. We saw an absolute cliffhanger in the first game, but games are coming thick and fast. Tomorrow, Central Punjab versus Khyber Pakhtunkhwa will be the morning game, and Balochistan will lock horns with Southern Punjab in the afternoon. Kingdom Valley National T20 Cup from Multan Cricket Stadium. Missed out there, Bangalzai. He could have hit it anywhere. Third fielder was up in the ring. He probably wanted to get it past him for a boundary. Yeah, wanted to be cute, and rightly so. Fielder inside the circle at third point. All you need to do is just put the bat on the ball and you will get runs. Is it clean enough? Just enough to get it over the infield. We'll get a couple of runs. No dramas. Bangalzai is making sure of that. And that equation of 18 of 16. Really, Balochistan is in the driver's seat. The important thing is how quickly they want to finish it to get their net run rate a boost as well. Well, 4 teams qualify for the semis. If you got the points, doesn't matter. So no need to hurry. 16 runs, 16 deliveries and 18 runs. No run. Both threatening to go for that run. Like I said, they're pretty comfortable. They don't need to take any chances. Shan Masood at the non-striker end is the kind of cool head you need. And chase is even tougher than this. This one shouldn't be that difficult a task. Junaid Khan still enjoying his cricket.
pulled quite decently earlier on. Good experienced campaigner to have around. This Balochistan side has a good mix of youth and experience. Asad Shafiq at the top of the order does really complement well with Hasibullah. And then Bangal Zai with Shan Masood. He placed it nicely. The chase is on, but in vain. Just opened the face of the bat and got plenty of power from that roll of the wrist. Yeah, full toss. Just angled it. Placed it beautifully. Good effort, Ali Asfan. Just out of reach. The equation is pretty simple now. 14 runs, 14 deliveries. It's pretty easy for Balochistan. Dead ball. Akhlaq moved away at the last minute. Bowlers normally do not like that. Central Punjab, let's talk about them, if you want to. They've got it horribly wrong in this tournament. They've got these big stars playing early in the tournament. Somebody like Ahmed Shahzad, Wahab Riaz also in the side. Just hasn't worked for them. Tried a few youngsters. Tactically, I believe they just missed out on few things. Team selection, and a lot of times, even if you talk about today, they won the toss and batted first. That was a strange decision to me. And a bowler short. They don't have many seamers in the side. Azhar Zaidi. What do you think? Where did they go wrong? Well, I'd go one step ahead and say that the appointment of Qasim Akram as a captain really backfired on them. He's a young cricketer, very talented, making a name for himself. That was asking a bit too much to handle all these superstars in his side. And that didn't work well, and that really affected his own performance as well. Shan Masood. Oh, that's a soft dismissal. Amir Yameen could not believe his luck. Shan Masood just played it straight into the hands of that fielder at fine leg. And a first ball duck. Unusual occurrence for Shan Masood. Yeah, the shot was on all right. But just unlucky that it went straight to the fielder. The only man there. Sam Amir making no mistake. Is there a twist in the tail? Is there anything for Central? That's the question. 153 for 3 after 18. Hussain Talat is the new man in. Opportunities with the bat have been few and far apart in this tournament for him. Really didn't get many chances to show his credentials. 26 years of age. He's been around for a while now. Look at those games pile up. 143, 2,759 runs. That average and strike rate is pretty decent. 80 as his best, 80 not out in fact. Good all-round cricketer, no doubt about that. Can bowl well, is an excellent fielder. Hussain Talat, what is Shoaib Malik telling at the moment? Come on guys, we can do it, we can still do it. 12 balls, anything can happen. 13 runs, couple of wickets in 1 over, 1 good over at 1 or 2 run over. You're just clutching to the straws, Ali. I just want to
I just want this game to go till the last ball. That's it. Simple. Well, Muhammad Ali has got the ball, and if he's thinking the way Ali is thinking, then definitely he's going to bowl a belter of an over and give away only 2 runs. Well, he's the race bowler. It has to come from him, because this is the most important over. Can he bowl a maiden? Couple of wicket maiden. You've gone even better. You don't even want to give him 2 runs. Just got excited. Well, sorry about that. And Farhan wants a hat trick as well. Come on, guys. You guys from Central Punjab really making an effort for your side. There has been no maiden in this tournament, Shah Faisal. What a time this would be to bowl a double wicket maiden. Do it, Muhammad Ali. Well, there's a lot of effort from you guys here. I can understand that. A little more effort is needed from your boys in the middle. Here's Ali. Well, that maiden is not happening. Let's see if he can get a couple of wickets. Look, I've seen Muhammad Ali bowl some heavy spells. He has the potential of doing it. He has that potential of bowling those wicket-taking deliveries, and that's how Shah and Masood went. Just went cheeky, and unfortunately went straight to Sam Amir. So a new man to Muhammad Ali. What can he do? Can he make a match out of this? It's going to be a daunting task. It's going to be a difficult one. But cricket is a funny game. We know that. Strange things have happened. You need a miracle. Come on, Central, do it. Well, Hussain Talat hails from Lahore. His third man has been sent back. What is he looking around at? He's a good player. He can improvise well, particularly against spin. Mid-off is up in the ring. Mid-on is back. Soft hands. They want to do it in singles for now. Just the one boundary will seal it and take the winds out of Central Punjab sails. But for now, Balochistan is pretty content. Like you said, they're pretty high on table. As soon as they're collecting points, they don't need to worry about the net run rate or anything like that. Yeah, it's the victory that matters. Singles would do. But I like the energy. I just see a different energy at the moment from Central. Just for a couple of more deliveries. If they can hold on to it without giving a run, you know, you never know. Bangalzai had different intentions. Really sweet connection that really pinged off the middle of his bat and landed way back. He's not listening to us. Bangalzai, he says, I'm going to finish it. Finishing it in style. Beautiful. Just pitched up. That is the quality. That is what I want to see these youngsters do. Play in the V, play straight, rather than looking for that cow corner every time. Because if you can play like this, that is amazing. Took a step back in his crease, created his own length. He's come out in this tournament with completely different intentions. Very clear in his thoughts. Flat batted it down the ground. Just one bounce to Shoaib Malik. Talking about Bangalzai, he's had a couple of failures, but I think the clarity he has in mind, he goes after the bowling from ball 1, and this is what he's thought he can do it, and probably this will be his second big knock off the tournament. Well, these pitches that we have witnessed today, this pitch rather, is such a beautiful batting pitch. It's such a huge thing for these youngsters. The way Herrera played in the morning was just absolutely fantastic. Through the line you can play. Pitches in Pindi were a little different. Easily done. Santala doing the right thing, giving it back to Bangalzai, giving him an opportunity on the last delivery of this over. One stroke away, just 3 needed. This has been a very well controlled run chase, you have to say that. Balochistan has never looked in trouble, and at the halfway stage you felt
that Central Punjab was short about 15-20 runs, and that proven to be the case. Yeah, the batters at the top, they are the main culprits. He's a satisfied man. Mushtaq Ahmed has done a great job with Balochistan side. There you go. He finishes it in style. Absolutely sensational ball striking from this youngster from Balochistan. And he sees his team through to victory with a magnificent knock. High fives all around. A richly deserved victory for a very, very professional Balochistan outfit. Yeah, this will give them a lot of confidence. This is an authoritative victory. They've just outplayed these Central boys in every department, these boys from Balochistan. And we can surely say that they've dominated this game from ball one. The way they started off their inning with ball, Ahmad Butt, talk about him, has been brilliant. And then after that, Hasibullah and Abdul Wahid Bangalzai alongside Asad Shafiq, they've just beaten Central Punjab by 7 wickets, and this is how it all ended. Beautiful. This is what I want to see. Just play it straight and you will get the maximum reward, and he did. A lot of work to be done by Central boys. If they have to qualify for the semis, they need to get their 11 together. They need to get that combination together. They've called up Waqas Maqsood. Let's see if he plays in the next game. Disappointment, yes, surely, to this young captain Qasim Akram. They were up against this formidable, very experienced Balochistan side led by Yasir Shah, and they looked well in control of this tournament even. You see the combination. We got test legends like Yasir Shah, Asad Shafiq, Junaid Khan, all at the back end of their careers. And then we have Bangalzai, Hasibullah, really at the start of their careers, a blossoming career, one would hope. And then we have the seasoned performers like Kashif Bhatti, Ahmad Butt. It's a really, really slick unit from Balochistan, and they're getting the results as well. 72 magnificent runs at the top of the order for Hasibullah. Played very nicely with Asad Shafiq, who got 47 for himself as well. Abdul Wahid Bangalzai played the winning stroke and saw the chase through. There wasn't much drama in the batting effort because it was very, very well controlled. It's been a struggle for Central Punjab bowlers. Amir Yamin bowled really well. He was the only bowler that impressed us all. Other than that, Faizan got a couple of wickets, and rest has been disappointing. That economy, look at that. Qasim Akram 13, Muhammad Ali, he was supposed to be their ace bowler, 13th economy. Ali Asfand 9. They've been expensive, all of these bowlers. And the result is that Balochistan winning it by 7 wickets. It all started off with Hasibullah taking care of Qasim Akram. Those 3 boundaries in 1 over really got the ball rolling for Balochistan. Then Asad Shafiq got in on the act. Sumptuous back foot drives, some wristy work. Power game. It really was a powerful blow. First from Asad Shafiq and then Hasibullah. Not power at all times. Some really nicely timed strokes. Decent footwork. Shots all around the pitch. Asad Shafiq started to have some fun towards the back end of his innings. When he lost his wicket, he had put the chase well and truly on course with that mammoth opening partnership. He was not going to stop. He really put Central Punjab bowlers to the sword. Well, it's such a beautiful pitch to bat on. You can play all around the ground. This was a chance, a difficult one. Still chance is a chance, and this one was played unconventionally on his knee. That straight drives, beautiful. That is where he lost his wicket. He timed it too well that it went straight to that deep cover fielder. Hasibullah and Shan Masood, a rare failure for him. The shot was alright, but went straight to the fielder in the end.
Bangalzai doing it in style, and Balochistan winning it by 7 wickets. Congratulations, Balochistan. They didn't win the toss, but after that, everything fell in place for them. Their bowling effort was splendid. 169, they restricted Central Punjab to. Shoaib Malik's effort was good, but it felt it was never going to be enough. Ahmad was star with the ball, 4 for 30. I said no dramas with the run chase. Asibullah, Asad Shafiq and Abdul Bangalzai made sure of that. Central Punjab chased the leather all afternoon, and Balochistan ran out winners by 7 wickets. Well, it's about time to take a short break, and we'll come back with the post-match presentation.
Hello and welcome to the post-match presentation of match 18 of the Kingdom Valley National T20, Balochistan versus Central Punjab. It was sort of a one-sided game in the end. Balochistan took the 2 points away. Before I bring in the Kingdom Valley player of the match, I'll introduce our guest, Mr. Mohammad Noman Ashraf. He's Sales Executive, Kingdom Valley. Thank you for joining us, sir. And now, moment for us to now introduce the Kingdom Valley player of the match. Scored 72 of 53 with 7 boundaries and 3 sixes, Hasibullah. He'll receive the cash award of 25,000 and also the trophy from Mr. Mohammad Noman Ashraf. Brilliant knock from Hasibullah once again, opening the batting for Balochistan. The margin of victory was 8 wickets, completely took the game away from the opposition. हसीब से बात करते हैं. हसीब, शानदार चल रहा है इस वक्त आपका ओवरऑल जो फॉर्म है. मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ओपन जाते हैं, असद शफीक साथ होते हैं, फिर शान भी आते हैं. कितना फ़ायदा होता है एक सीनियर पार्टनर का जो दोनों आपको मिलते हैं बार बार, क्योंकि आपने ज़्यादातर बैटिंग इन्हीं के साथ की है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझसे परफॉर्म करवाया. जी बिल्कुल, असद भाई समझाते रहते हैं, जैसे कि क्रीज़ पे 2-3 इनिंग्स मेरे नहीं लगे थे, तो असद भाई यही कह रहा था कि आपने टाइम लेना है, और सर्कल में मैंने टाइम लिया तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ, और साथ में वो बहुत उसके साथ खेल के बहुत एक्सपीरियंस होता है बंदे को. कहीं आपको होता है प्रेशर इस बात का कि बड़ा स्कोर अगर चेस करो कि मुझे पावर प्ले में स्कोर करके देना है ताकि आगे बैट्समैन को थोड़ी आसानी हो, या आप अपना फ्रीडम है कि टाइम लें जितना लेना चाहें? मैं तो अपने गेम खेलता हूँ, चाहे टारगेट कम भी हो या ज़्यादा हो, मुझे मतलब जो बॉल मिलता है अपने रेंज में मैं वही मार देता हूँ, और अपने आप पे बिलीव करता हूँ. आपकी बैटिंग देख के बहुत एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हसीबुल्लाह, आज के किंगडम वैली प्लेयर ऑफ द मैच. अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा कासिम अकरम, कैप्टन ऑफ सेंट्रल पंजाब. विल हैव अ फ्यू वर्ड्स. टुडे द मैच वाज वन बाय बलूचिस्तान बाय 8 विकेट्स. कासिम, प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हो नहीं पा रही हैं. आज का मैच लगा ऐसे कि 169 रिकवरी काफ़ी हो गई थी, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट विकेट नहीं ले पा रहा सही टाइम पे. जी बिल्कुल, देखें हमने 20-25 रन कम किए हैं इस विकेट पे, क्योंकि जिस तरह का विकेट था हमें करना चाहिए था. और बॉलिंग भी थोड़ी सी अच्छी नहीं रही, पहले 6 ओवर में इतने अच्छे नहीं रहे, और मिडल में अच्छी बॉलिंग रही, फिर एंड पे आके फिर वो बैट बॉल हुए जिसकी वजह से रन हुए. आपने कई बार जिक्र किया है मैच के बाद कि टॉप ऑर्डर में या कहीं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. कौन से एरियाज, ऑब्वियसली आप काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, 6 हो गए हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि वो चीज़ कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा? हमारे टॉप के जो 4 बैट्समैन हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो ओपनर्स हैं उनका वो अच्छा स्टार्ट देंगे तो एक अच्छा टोटल सेट होगा. अब ओवरऑल 4 मैचेस आपके बाकी हैं. अभी भी अगर आप चारों जीते हैं और ये 2 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हो सकते हैं. कुछ ऐसे एरियाज जो आप करना चाहें यहाँ पे? टॉस जीत के पहले बैटिंग या बॉलिंग का आई थिंक विकेट तो बहुत अच्छा है, चेज हो सकता था यहाँ पे. आपको लगता है कि टॉस इतना मैटर करेगा जब लाइट्स में गेम होगा यहाँ पे? जी, जब लाइट्स में गेम होगा तो मैटर करेगा, क्योंकि सेकंड में ड्यू भी होगा तो थोड़ा सा मैटर करेगा, बट दिन वाले मैच पे बिल्कुल नहीं. कल आपका केपी से मैच है, तो आई गेस अगर वो आप जीत जाएं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा टीम का, और वहाँ से फिर शायद पिकअप हो जाए सब. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलने. गुड लक टू यू. थैंक यू. Captain of Central Punjab. Now I'll call upon Yasir Shah, the captain of Balochistan, to have a few words with us. Once again, if you joined us, it's an 8-wicket victory. Yasir, अच्छा चला सिलसिला. रावलपिंडी में भी यहाँ आके अच्छा है कि पहले मैच में विन मिल गया. आपको लगता है कि यहाँ पे स्कोर काफ़ी बनना था? सेटिस्फाइड थे कि 170 आसान है, हो जाएगा यहाँ पे? मैं कोशिश यही कर रहे थे. उससे पहले जो मैच हुआ उसमें 191 हुआ, लेकिन वो भी 2 रन से वो जीते हैं टीम. तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि 170-180 के बीच में अगर हम पकड़ते तो इंशाल्लाह हम चेस कर जाएंगे. आपने अच्छे खासे मैचेस जीते, दूसरी पोजीशन पे आ गई है टीम. क्या स्ट्रेंथ लगती है आपकी टीम की? आप बैटिंग आपके टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है. आपके हिसाब से टीम की स्ट्रेंथ क्या है? हमारी टीम की स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है. हमारे दोनों, अगर बॉलिंग देखें तो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर बैट्समैन देखें तो मैच्योर बैट्समैन है हमारे साथ. जिस तरह आप देखें 170 हमने चेज़ किया तो बहुत अच्छे तरीके से चेज़ किया और 7 विकेटों से जीते हैं. तो थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम आता है फील्डिंग में, लेकिन आज हमने देखा हमारे प्लेयर्स एफर्ट्स कर रहे थे. गर्मी ज़्यादा थी लेकिन फील्डिंग में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे. अब ये टूर्नामेंट सारा दिन में हुआ है, अब शाम के टाइम पे जाने वाला है, एक दिन के बाद. कुछ लगता है आपको एज अ कैप्टन, सीनियर कैप्टन, के कुछ मेजर चेंजेस होंगे ड्यू की वजह से टीमों में, या लगता है कि ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा? ये कि अभी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह कल हमारे दिन को मैच है, उससे अगले दिन हमारे शाम को 7:30 बजे मैच है, तो वो देखेंगे कि ड्यू फैक्टर क्या है और उस हिसाब से फिर चेंजेस करेंगे.
चलिए नंबर 2 पे अभी आपकी टीम है, उम्मीद करते हैं और आगे जाएं। इंशाल्लाह। थैंक यू। Well played. Balochistan के कैप्टन यासिर शाह, and that also concludes the presentation. After a wonderful day's cricket, this is how the table looks. At Kingdom Valley National T20 Cup, Khyber Pakhtunkhwa, the undefeated side, Balochistan hot on their heels with 4 victories. They played one more game. Sindh also collected a couple of points earlier today. Rather, Northern collected. So Northern and Sindh are neck to neck. Central Punjab and ATF Southern Punjab have plenty of work to do. Action is coming thick and fast. We'll have 2 more matches tomorrow, the final day of the morning games, because day after that we will be shifting to evening and afternoon games. In the morning tomorrow, we've got Central Punjab back on the park after mauling today. They'll be taking on Khyber Pakhtunkhwa. Balochistan will take Southern Punjab live from Multan Cricket Stadium. Well, I hope you enjoyed our coverage today, and we look forward to your company tomorrow. Until then, from Multan Cricket Stadium, it's good night.